You can never take away the power of my It's out of my hands, but I'm still in control. It's out of my hands. You can never take away the power of my हाई क्या हाल चाल दोस्तों। रेशु वेलकम, एस्ट्रेक्स लूने वेलकम 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 टू द स्ट्रीम। आज भी लिनी की स्टोरी क्वेस्ट करेंगे और जो ट्रेल ब्लेजर क्वेस्ट है वो भी पूरी होगी आज, डिपेंडिंग ऑन कि लिनी की स्टोरी क्वेस्ट कितनी बड़ी है। वॉलपेपर कैसा लग रहा है? आह, जरा मैं डिस्कॉर्ड को एग्जिट मार देता हूँ, नहीं तो पीछे से टुणुक 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 होता रहेगा। जो भी डिस्कॉर्ड पे देखना होगा फ़ोन पे देख लूँगा। थैंक यू वेरी मच। घेंसिन इम्पैक्ट, आज का सवाल 7 करोड़ रुपए का बिल्लो बक। अच्छा मुझे इसका मतलब बताओ, इस लाइन का मतलब क्या है? जहाँ तुम्हें इस लाइन का मतलब पता चलेगा तुम्हें सवाल पूछना बंद कर दोगे। बताओ, लाइक दबा दो और इसका मतलब बताओ मुझे। सारे काम बाद में, लिनी की स्टोरी क्वेस्ट पहले होगी, उसके बाद जितने भी क्या कहते हैं छोटी मोटी क्वेस्ट हैं, इवेंट्स हैं, वो सब बाद में। लड़की भाग गई तो केला का क्या करोगे? हे भगवान, ये मतलब नहीं होता इसका। पंजाबी में बग्गे का मतलब होता है जो बंदा बहुत गोरा होता है ना, उसको कहते हैं बग्गा पंजाबी के अंदर। ठीक है, कि तो जो कवि है वो ये कहना चाह रहा है कि जो लड़की है, जो बिल्लो है, लड़की है, उस गोरे गोरे लड़कों को क्या करेगी, क्योंकि कवि खुद काला है रंग में। आई बात समझ में? आज तुम्हारे सवाल का जवाब दे दिया मैंने कि बिल्लो बग्गे बिल्लियाँ क्या करेंगी। इसका एक्चुअली मतलब ये है। ठीक है, चलो अब लिनी की स्टोरी क्वेस्ट करते हैं। कहाँ गई? वैसे ये बहुत सुंदर सा नहीं है? ब्लू कलर का ह्यू आ रहा है जो क्या कहते हैं वर्ल्ड क्वेस्ट है फाउंटेन वाली, उनके अंदर। कहाँ है भाई? अरे लिनी की स्टोरी क्वेस्ट कहाँ है? वेयर द हेल इज। अच्छा ये यहाँ पे, सॉरी अनलॉक करनी पड़ेगी, मैं तो भूल ही जाता हूँ, अनलॉक करनी पड़ती है। कब तक है स्ट्रीम? जब तक है जान। द फैंटम थीव्स रीअपियरेंस, फीलिस फ्यूशस चैप्टर एक्ट 1, द फॉरगॉटन थीफ। लेट्स गो। तीन बजे तक होगा? ये नहीं कह सकते कि 3 बजे तक होगा कि नहीं। That I don't know.
So you believe that this warning letter was sent by the Phantom Weasel? Phantom Weasel. Absolutely. I've said it before and I'll say it again. The Phantom Weasel never acts as you expect. He must have faked his own death 10 years ago using a body double. साइरस वेलकम। 4-5 लेवल का टैलेंट है, 70 लेवल सारे ऑफ पीस रेलिक्स क्लारा का वेपन। फिल इम्बिबिटर 50-60 के मार रहा टिंग्यून के साथ मार रहा है ना। Now that he's back, I'm sure the guards who worked on his case back in the day are in for a headache, but however this turns out in the end, the one thing it won't be और रेशियो कैसे is हो? boring. आज पुल करोगे तो बताओ, कर लूंगा। लिनी की स्टोरी को सुझान दो, अपने अकाउंट का आईडी पासवर्ड भेज दो, आज येलान का पुल कर लेते तुम्हारे अकाउंट पे। बताओ। Couldn't agree more. As a journalist, I'm gonna get a lot of mileage out of this one. Thank you, sir, for your time. Now, whom should I interview next? Huh? Hey! What a coincidence! Fancy meeting you here. Perfect timing. So, the Phantom Weasel's latest warning letter. What are your thoughts? Yeah, this is the first time we're hearing of this one. Could you clue us in? Huh? Oh, sorry. Yes, this case is from a decade ago. I guess you wouldn't know about it. Well, not to worry. You're in good hands because I'm a professional. The story goes like this. Okay. 10 or so years ago, a phantom thief became active in the court of Fontaine. Known only as the Weasel, nobody knew his true identity, and the authorities never managed to catch him. Okay. Wow, cool! He sounds like one of those mysterious night burglars that you read about in novels. न्यू इवेंट की वजह से थोड़ा बहुत लेवल अप कर पाया एम्बिबिटर का। हाँ, मेरे पास भी क्रेडिट्स नहीं है यार। एम्बिबिटर मुझे भी क्या कहते हैं अपग्रेड करना है, और मैं उसको तब तक अच्छे से नहीं कर पाऊंगा जब तक मुझे उसका लाइट कोन नहीं मिल जाता, क्योंकि मैं ऐसे ही कोई एरागर लाइट कोन, क्योंकि मेरे पास बाकी सारे लाइट कोन्स ना लो लेवल के हैं, तो वो एम्बिबिटर को दूँ, फिर उन लाइट कोन्स को अपग्रेड करूँ, रिसोर्सेज वेस्ट करूँ। उससे बेटर जब लूने का लाइट कोन मिलेगा तब सीधा उसको अपग्रेड करूँगा। Precisely. Well, except the part where they actually have a good reputation. Our weasel targeted whatever people held dear, and no one was safe from his predations. He would just as soon steal a necklace from a rich merchant's safe as he would a toy doll given to a commoner child for their birthday. I know, the phantom thieves you read about in novels rob the rich to pay the poor, but this guy did not discriminate. Unsurprisingly, this didn't work wonders for his public reputation. Every man and his dog wanted to see him behind bars. Yeesh. So, did they catch him? Not exactly. There's a good chance that the weasel would still be at large to this day if it hadn't been for an accident 10 years ago. A magician named Caesar fell to his death in a botched high-altitude escape performance. When the police went through his personal effects, they found a hoard of stolen loot and gadgets used for criminal activities. And that was how the Phantom Weasel's identity was revealed to all. Okay. Sure enough, thefts in Fontaine went down after Caesar's death. But today, 10 years on, the notorious thief has once again issued one of his warning letters and pasted it on the gate of the Opera Epiclese for all to see. मैं तो फ्री वाला दूंगा, हर्टा शॉप वाला। क्लारा का वेपन क्लारा के पास चला जाएगा। वैसे हर्टा शॉप वाला वेपन सब लोग बता रहे हैं कि बहुत अच्छा है, पर उसकी पैसिव पढ़ के ना मुझे उतना समझ में नहीं आता। मुझे मतलब समझ नहीं आ रहा कि हाउ इज़ इट बेटर। आई मीन ऑब्वियसली जो उसका सिग्नेचर लाइट कौन है एम्बिबिटर लूने का, उससे बेटर तो होगा नहीं, है ना, लेकिन वो इतना बेटर कैसे है मुझे समझ में नहीं आ रहा। वही वाली बात है, यूज़ करके पता चलता है। डैमेज आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि अगर मैंने DPS पुल किया है, ठीक है, तो मुझे DPS का लाइट कोन चाहिए। उस लाइट कोन से उसका क्रिट रेट का इशू भी सॉल्व होता है, और उस लाइट कोन से उसका जो वो है क्या कहते हैं एनर्जी रीजनरेशन का इशू है वो भी सॉल्व होगा, क्योंकि मैं टिंग्यून को यूज़ नहीं कर रहा हूँ टीम के अंदर। मैंने बोला था ना वो वाला बेटर है, R1 सिग्नेचर से बेटर है। R1 सिग्नेचर से बेटर है नहीं, ये तो मुश्किल है, ये तो मुश्किल है। पैसिव तो सही है एम्बिबिटर के लिए, मैं चेक करूँगा। मैं यूट्यूब पे लोगों ने ज़रूर कंपैरिजन डाला होगा, मैं कंपैरिजन चेक ज़रूर करूँगा, क्योंकि अगर वाकई में बेटर है, तुम समझ रहे हो, क्रिट रेट चाहिए। क्रिट रेट क्या कहते हैं कहाँ से आएगा? उस लाइट कौन से क्रिट रेट मिल रहा है, उस लाइट कौन से जो सिग्नेचर वाला है उससे एनर्जी रीजनरेशन मिल रही है, ठीक है, क्योंकि मैं उसे मोनो इमेजिनरी टीम में यूज़ कर रहा हूँ। मोनो इमेजिनरी टीम के अंदर टिंग्यून नहीं है उसकी अल्टीमेट को बढ़ाने के लिए बार बार, तो आई हैव टू यूज सम एनर्जी रीजनरेशन ऑन हिम। चलो मैं चेक करूंगा, मैं यूट्यूब पे देखूंगा, पर सिग्नेचर तो निकाल के रहूंगा मैं।
I had to squeeze through the crowd this morning to get a photo as soon as I heard. Here, it's this one. So, this is the warning letter, huh? Let's see what he wrote. 3 days from now, when evening falls, I shall take from you that which you hold most dear at the Opera House, just as you did to me 10 years ago. This is, without a doubt, a clear declaration of criminal intent. After years of laying low, the Phantom Weasel is back with a vengeance. What once seemed like an open and shut case has been blown wide open again. But why has he re-emerged now, and what does he want? I sense an epic scoop, and I'm going for it. Uh-oh. If this thief will steal anything that other people value, does that mean even we might be targeted? Aww. But Paimon doesn't want to get kidnapped. Well, he'd have to go through you first. You would stop him, right? Okay, the people have spoken. It's clear that the Lyney public are ऊपर very performance दे रहा concerned about the वहाँ पे। Phantom Weasel's reappearance. अटैक प्लस क्रिट डैमेज मिल रहा और क्या चाहिए, बट सिग्नेचर तब सही है अगर क्रिट रेट एंड ईआर का इशू आए तो। वो तो आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा। आप 4 स्टार का स्टोरी क्वेस्ट करते हो? 4 स्टार की स्टोरी क्वेस्ट आती कहाँ है भाई? ये तो इसकी स्टोरी क्वेस्ट थोड़ी, लिनी की स्टोरी क्वेस्ट है ये। Let's see, I've got a photo of the letter, my interview notes. Yep, that should be enough to form the skeleton of my article. It does feel like something is missing, though. Something exclusive. हैंगआउट यार, हैंगआउट में स्ट्रीम पे नहीं करता, बहुत बोरिंग हो जाते हैं। Who should I interview next? I need someone with a more concrete connection to the weasel. Is that who I think it is? Lyney! Magic, magician, Caesar, the Phantom Weasel. That's it. Let's go interview Lyney. You see, the original Phantom Thief Caesar was a magician too. And what do Phantom Thieves and magicians have in common? They both have an air of mystery about them. Perhaps there's a connection there. मेरा ऑफ पीस है बट आराम से क्रिट रेट 70 प्लस, क्रिट डैमेज 140 प्लस हो गया। मतलब सारे कर रखे? नहीं, सारे नहीं किए हुए अभी, बहुत सारे तो रह गए हैं। Are you serious? What sort of a deduction is that? Oh, relax. My journalistic instinct tells me that an exclusive news story is beckoning. Let's go. No time for delay. अब तुम लोगों ने मुझे थोड़ा सा इंट्रीग कर दिया है, मैं जरा एक बार चेक करूंगा। इसे आगे बढ़ाने से पहले लेट्स गो। अब यहाँ पे चेक करते हैं। बिबिटर लूने, इसके सिग्नेचर लाइट कोन का नाम क्या है? सिग्नेचर एलसी वर्सेस फॉल ऑफ एन ईऑन। इसने कंपैरिजन डाला होगा। हाँ, ये डाला हुआ है ना, इम्बिबिटर लून लाइट कोन कंपैरिजन ब्राइटर देन द सन वर्सेस फॉल ऑफ एन ईऑन, होंका स्टार रेल। लेट्स सी, एक मिनट। ये इम्बिबिटर लून 70 to 183 के ऊपर है, 2838 अटैक है और क्या कहते हैं सिग्नेचर राइट कोन के साथ है। सिग्नेचर राइट कोन R1 C1 S1 सॉरी, सुपर इम्पोजिशन 1 लेवल 80। इसने ट्रेसेस नहीं दिखाए, ट्रेसेस कितने हैं। और इस लाइट कोन के साथ इस बंदे का 70 to 183 हो गया है लाइट कोन के साथ। वो विदाउट लाइट कोन था बाहर क्या? अरे हाँ, 70 to 183, ठीक है ओके। एनर्जी रीजनरेशन रेट 100% है, तो इसका खुद का लाइट कोन लगने के बाद भी इसका जो ER है वो 100% के ऊपर है। ये 120 तो होना चाहिए कम से कम। 71% इमेजिनरी डैमेज बूस्ट है, यानी कि खुद का सेट दिया होगा। ट्रेसेस सारे मैक्स हैं। ये R1 है ना? R1 मतलब नहीं, ये S1 है। इम्बिबिटर लूने का सिग्नेचर लाइट कोन S1, R1 मत बोला भाई, कंफ्यूज हो जाता हूँ मैं। अपनी वोकैबुलरी चेंज करो। रेलिक्स ठीक है, 2 पीस रूटिलेंट अरीना है बीच वाले और 4 पीस वेस्टलैंडर है बेंडेटरी वाला। ठीक है, कूल। और ये E0 के ऊपर है। लेट्स सी हिज डैमेज। स्टैग्नेंट शैडो और विदाउट एनी बफ है, कोई बफर नहीं है, खाली हीलर है लोचा। कोई टिंग्यून नहीं है, कोई यूकॉन्ग नहीं है, कोई ब्रॉन्या नहीं है, कुछ नहीं है। अब देखेंगे रॉ डैमेज कितना आ रहा है। एक ही बात नहीं है भाई R1 और अच्छा, इसने क्या कहते हैं अपने टैलेंट प्रेस करके गया अंदर ये।
ओके पहले इसने अपनी सीधी अल्टीमेट यूज की है, ठीक है, मेक सेंस, कोई बफर तो है नहीं। 33,000 डैमेज विदाउट एनी बफ। और ये इसने लेवल 3 अपना यूज किया है विदाउट एनी बफ। 54,000 लेवल 3 वाली इसकी बेसिक अटैक विदाउट एनी बफ। ये सिग्नेचर लाइट कौन है? $72,000 विदाउट एनी बफ। 72,000 विदाउट एनी बफ। अभी इसके पास कोई बफ नहीं है। मैं बार बार इस चीज को रिआइटरेट कर रहा हूँ। कोई टिंग्यून नहीं है, कोई यूकोंग नहीं है। 72,000 डैमेज। Receive divinity. The dead return. अब अपनी अल्टी यूज करेगा। Blood cleansing dragon. 17,000 हाँ चलता है, क्योंकि इस टाइम एक ही टारगेट है, तो समझ में आता है। हाँ ये ऑटो पे खेल रहा है, जो भी बंदा ऑटो पे खेल रहा है, क्योंकि उसको पता है ना कोई यहाँ पे बफर तो देना नहीं है, तो ऑटो पे छोड़ दो चला के। जब बफर या डी बफर होता है तब थोड़ा सा लगता है कि पहले ये आएगा, दोबारा ये आएगा। यहाँ से ऐसा कुछ नहीं। 35,000 नॉट बैड, नॉट बैड। अब ये लड़ेगा अब ये यूज करेगा फॉल ऑफ एन ईऑन। भाई कैरेक्टर है, बहुत स्ट्रांग है। हाँ ये तो है। ओके 70 to 183। अच्छा लाइट कौन स्विच करेगा अब ये? सुपर इम्पोजिशन 1 वाला फॉल ऑफ एन ईऑन। Whenever the wearer attacks, their attacks increase by 8%. In this battle, this effect can stack up to 4 times. 8 shock 32%. When the wearer inflicts weakness break on enemies, the wearer damage increases by 12% for 2 turns. यानी कि ये अटैक इंक्रीज है और ये डैमेज इंक्रीज है। समझ गया? S1 नहीं S5। अरे S पता तो चलने दो भाई। S5 वाला निकालना भी क्या कहते हैं 2 मिनट में तो निकल नहीं जाएगा, बहुत सारा फार्म करना पड़ेगा तभी S5 निकलेगा। अभी हो गया 54 183। क्रिट रेट नीचे आ गया पर क्रिट डैमेज उतना ही है, ठीक है। सो इट शुड नॉट मैटर। अटैक भी 200 नीचे आया, 200 अटैक नीचे आ गया। एनर्जी रीजनरेशन उतना ही है, इमेजिनरी डैमेज बूस्ट उतना ही है। डैमेज 25% का हो जाएगा S5 में। 24% तो अभी है, 25 कैसे हो जाएगा? 16% है। 16 चौक कितने हो गए? मतलब ऑलमोस्ट 60-64% के करीब मिलेगा S5 के ऊपर। अटैक बूस्ट और डैमेज बूस्ट बहुत ज्यादा मिलेगा। प्रेसेस वही हैं, रेलिक्स वही हैं, आइडलॉन्स वही हैं। सेम टीम, नो बफर नो डी बफर। पहले वाले में इसने 33,000 मारा था, जो ओरिजिनल अटैक किया था इसने स्किल के ऊपर। 33 किया था, कितना किया था? नहीं पहले इसने अपनी अल्टीमेट पहले यूज की थी, अभी इसने अल्टीमेट बाद में यूज कर रहा है। पहले इसने स्किल यूज की है 35,000 स्किल अटैक। अब अल्टीमेट का अटैक देखेंगे। 40,000 S1 पे। वो अल्ट के बाद किया था, ये अल्ट से 40,000। दोबारा से ई पे 40,000 हुआ है। मैं इसका हाई हिट देखना चाहता हूँ। एक हाई हिट 72 गया था,
याद है 72,000 गया था एक स्किल के ऊपर, मैं वो देखना चाहता हूँ। अब यहाँ पे स्किल पॉइंट बचे ही नहीं है ना, इसके पास खुद का स्किल पॉइंट है। वाह, Cleansing dragon. 94। अब मारेगा फुल। Receive divinity. Then return. 39। लेकिन अपने सिग्नेचर पे जो उसने 72 के मारा था ना, वो अब तक टच नहीं किया। मैं 94 के नहीं बोल रहा, 9400 बोलना चाह रहा था। पता है भाई, तुम्हें लगता है उसने 94 के मारा होता तो मेरा मुंह ऐसा होता? Nothing major. Rise. 37। 72 अल्ट के बाद किया था। हाँ, अल्ट के बाद किया था। लो, अल्ट भी आ गई। Blood cleansing dragon. 30,000 अल्ट। अब मरी गए सब लोग। बॉस वो हाई टच नहीं किया, उसका एक रीजन एक और बताऊं क्या है? जो सिग्नेचर लाइट कोन है ना, उसका बेस अटैक ज्यादा है फॉल ऑफ इन ईयन से। फॉल ऑफ इन ईयन से कम 200 अटैक ज्यादा है उसका, वो भी मैटर करता है। एक मिनट, लोगों ने तो और भी कंपैरिजन किए होंगे। इम्बिबिटर लूने कौन कंपैरिजन फॉल ऑफ इन ईयन वर्सेस मोल्स वेलकम यू ने नहीं। ये देखते हैं, डान हंग इम्बिबिटर लूने बेस्ट F2P लाइट कोन वर्सेस सिग्नेचर कंपैरिजन होंकाई स्टार रेल, ये वाला भी है 2 दिन पहले का। ये देखते हैं। S1 S5 जो तुम कह रहे थे ना, ये सुपर इम्पोजिशन 1 है, यानी कि 2 है ये, और ये S5 है। ठीक है, मितेश वेलकम वेलकम। S5 पे 48 और S1 2 स्टैक्स पे 42। Wicked lumen scales. Blood cleansing dragon. 33 29। ये 4 स्टैक्स पे, जब उसके 4 स्टैक अटैक के 4 स्टैक पूरे मिलते हैं, ये उस पे। Chose the wrong enemy. ये ब्राइटर देन सन पे 96% क्रिट रेट, 104 क्रिट डैमेज। ये तो फिर भी S1 था। S5 वाला देखो, S5 ही तो है। बट ये एनर्जी रीजनरेशन रेट ना, ये ठीक नहीं है। ये एनर्जी रीजनरेशन रेट बहुत कम है। 100% इज नॉट गुड इनफ। E0 ये S1 है, ये S5 है। S5 पे 78 104। हाँ, मतलब क्रिट रेट कम हो जाता है ऑब्वियसली, क्योंकि सिग्नेचर लाइट कौन से क्रिट रेट मिलता है। द सिग्नेचर स्टिल बेटर बिकॉज ऑफ दीज कंसिडरेशंस। ऑन द फॉल ऑफ एन ईयन ब्रेक पैसिव नॉट 100% ऑफ टाइम 1 मोर एनर्जी फॉर द सिग्नेचर फ्री क्रिट रेट सो यू कैन स्वैप बॉडी टू क्रिट डैमेज। एग्जैक्टली, अगर आप फॉल ऑफ इन ईयन यूज करते हो तो आपको अपना क्रिट रेट, क्योंकि देखो जो ये 4 पीस बेंडेटरी है ना, एक चीज दिखाता हूं। जो 4 पीस बेंडेटरी है, एक मिनट, ये वाला था, ये वाला सॉरी, रूटिलेंट अरीना जो है, इसका पैसिव तभी काम करता है जब इसका क्रिट रेट तुम्हारा 70% से ऊपर पहुंचता है। अगर तुम्हारा क्रिट रेट 70% से ऊपर नीचे है तो रूटिलेंट अरीना का पैसिव काम नहीं करता। ठीक है, पैसिव काम नहीं करेगा, फायदा नहीं। और 70% क्रिट रेट ले आने के लिए तुम्हें बॉडी पीस के अंदर क्रिट रेट देना पड़ेगा। जबकि अगर तुम सिग्नेचर लाइट को निकालते हो तो तुम आराम से क्रिट डैमेज दे सकते हो बॉडी पीस के अंदर, क्योंकि क्रिट रेट जो है तुम्हें लाइट कौन से मिल रहा है। समझो नरुतो भाई, कोन्निचिवा, वेलकम वेलकम। अरे सिग्नेचर बेटर है ओवरऑल, बट एऑन वाला उतना ही सही है फ्री। हाँ, अगर तुम्हारे पास नहीं है निकालने के लिए तो जो एऑन वाला है, इट इज वेरी क्लोज सेकंड, वेरी क्लोज सेकंड। डैमेज के हिसाब से S5 एंड ऑफ एऑन बेटर है, मगर अगर ER चाहिए तो नहीं, डैमेज के हिसाब से बेटर नहीं है।
जो डैमेज पॉसिबिलिटी है ना, डैमेज पॉसिबिलिटी सिग्नेचर में ज़्यादा है। जैसे कि मैंने बताया कि तुम अपना आराम से जो बॉडी पीस है, ये वाला जो बॉडी पीस है, इसके अंदर आराम से क्रिट डैमेज दे सकते हो। अगर फॉल ऑफ एन ईऑन यूज़ करोगे तो तुम्हें यहाँ पे क्रिट रेट देना पड़ेगा। क्रिट डैमेज दोगे तुम्हारा क्रिट डैमेज ज़्यादा बढ़ेगा, सिंपल इज दैट। ठीक है। और रोप के अंदर तुम ER दे सकते हो अगर तुम टिंगियन यूज़ नहीं कर रहे हो तो। अगर ER नहीं भी देना तो दैट्स ओके, तुम यहाँ पे आराम से अटैक रोप यूज़ कर सकते हो, सिंपल। है ना। बट ऑन द फॉल ऑफ ए नियॉन इज रियली गुड रिप्लेसमेंट इफ यू डोंट हैव द सिग्नेचर एंड इट्स फ्री। सिग्नेचर नहीं है तो सीधी सी बात है। सो दैट सेटल्स इट। हम सिग्नेचर निकाल के रहेंगे क्योंकि DPS को तो कम से कम उसका सिग्नेचर पकड़ाऊँ। बाकी सारे कैरेक्टर्स जो हैं मेरे वो अपने उन पे ही हैं, इधर उधर के वेपन्स पे ही हैं। ठीक है। मतलब 4 स्टार का वेपन मेरे पास है, जैसे कि मेरी यूकॉन्ग अपने सिग्नेचर वेपन पे है। टिंग्यून का सिग्नेचर वेपन मुझे चाहिए क्योंकि टिंग्यून को मैंने इस टाइम ब्रोनिया का सिग्नेचर वेपन दिया, और जब मैं ब्रोनिया यूज़ करूँगा तो मुझे ब्रोनिया को देना पड़ेगा वापस। और टिंग्यून का सिग्नेचर वेपन बैटल पास के अंदर है। तो येस्टरडे मॉर्निंग में बैड लक था और रात में सुपर लकी इन होंकाई। अच्छा, मैं तो वो दूसरा क्रेट रेट वाला रोप के सेट यूज़ करता हूँ, ये वाला तो फार्म भी नहीं किया। ये वाला बेटर है, इसको फार्म करो, तुम्हें डैमेज ज़्यादा देगा, 20% डैमेज बूस्ट है। और तुम एक और काम कर सकते हो, जो 4 पीस जो तुमने क्या कहते हैं वेस्ट एंड बेंडिटरी सेट दिया हुआ है इमेजिनरी डैमेज वाला, उसको 2 पीस कर दो और 2 पीस तुम वो दे दो जो काउबॉय वाला सेट नहीं, मस्कटियर ऑफ द विंड, वो दे दो। वो भी सही काम करेगा। वैसे आपका IL बिल्ड हो गया क्या पूरा? नहीं, अभी कहाँ हुआ भाई, पैसा नहीं है इन गेम, पैसा नहीं है अपने पास। चलो स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं, उसके बाद चलेंगे हम बाद में। Wow, Mr. Magician! How did you know which card I picked? Oh, it's simple. Come closer and I'll let you in on my secret. Magicians have a special skill called telepathy, which means... Really? Then, what am I thinking now? क्रिट रेट 70% हो सकता है विदाउट सिग्नेचर। हाँ बिल्कुल हो सकता है, तुम्हें क्रिट डैमेज को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, एज सिंपल एज दैट। तुम्हारी किस्मत बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए कि तुम्हें 70% क्रिट रेट मिल जाए विदाउट सिग्नेचर लाइट कोन, और तुम्हें क्रिट डैमेज भी 150 के ऊपर मिल जाए। ऐसा बहुत कम होता है, मैंने अब तक देखा नहीं है। तुम कर लो तो मुझे दिखा देना। हाँ मैं यूज़ करता हूँ 2 पीस इमेजिनरी, 2 पीस अटैक परसेंटेज। वैसे अटैक परसेंटेज का 4 पीस भी बहुत अच्छा है। यस, इट इज़ अ वेरी गुड चॉइस। तुम 4 पीस मस्केटियर ऑफ विंड दे सकते हो बहुत आराम से, वो भी काम करेगा। Well, first you need to relax, because I can see that you're clenching your fist in your mind, as if to say, no, I mustn't let him guess it. Aww. And now you're getting a little flustered. You're trying to find a way to empty your mind, to think of nothing at all. But the more you try to hide a secret, the easier it'll come out. क्रिट डैमेज बॉडी है मेरे पास, तो क्रिट डैमेज बॉडी के साथ अगर तुम 70% क्रिट रेट ला पा रहे हो, यू आर एक्सट्रीमली लकी। यू आर इन द 1%, क्योंकि 99% लोग नहीं कर सकते हैं। तुम्हारी लास्ट चैट मिस हो गई। मॉर्निंग में 35 पेटी पे यानचिंग पे 50-50 लूज, नाउ E टू यानचिंग, और रात को 10 पेटी पे डान हंग मिल गया। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, बट मुझे डान हंग जो है 75 पे जाके मिला। You snuck out from home today, didn't you? You told your family a little lie so you could come out and play. Now, that's not a good habit. You can tell? Oh boy, you really can read my mind. Of course. Oh, and that's the end of my performance. You should really be heading home. Remember to apologize to your family, all right? They must be worried about you. All right, got it. Bye, Mr. Magician. मैं तो अभी तक फूशवान पे वो नहीं हूँ, क्या कहते हैं, टोटली नॉट सोल्ड ऑन फूशवान। शी इज स्ट्रॉन्ग, बट तुम लोगों को पता है, तुम लोगों को पता है कि मेरा क्या कहते हैं पर्सपेक्टिव क्या है कैरेक्टर्स को पुल करने को लेके। बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती तो पुल करता हूँ। मुझे एक दूसरा DPS चाहिए था तो मैंने डानहंग पुल कर लिया। Why, hello. We meet again. Are you looking for me? What's the situation? Well, why don't you guess, Mr. Telepathic? Oh, please. You didn't believe that spiel, did you? The power of telepathy is quite beyond me.
I'm sure that child would beg to differ. Seemed like you were right on the money. That was nothing more than a little trickery. I made an educated guess based on his micro-expressions. That, plus the fact that he was the only kid here without his parents, and he looked as guilty as sin. He made it easy for me. बट एक प्रॉब्लम है, ऑफ पीस है बिकॉज प्री फार्म नहीं किया था. तो वही तो मैं कह रहा हूँ दोस्त, सारे पीस सेट के ऊपर मिल जाएं तुम्हें, ऑन पीस स्टैट्स मिल जाएं, तुम्हारा बिना सिग्नेचर लाइट को उनके 70% क्रिट रेट हो जाए और तुम्हारा क्रिट डैमेज भी 150% से ऊपर हो जाए, है ना. तो फिर तो भाई मेरे ख्याल से तुम्हें लॉटरी का टिकट खरीद लेना चाहिए, क्योंकि किस्मत इतनी अच्छी चल रही है तो हो सकता है तुम्हारे 200-300 करोड़ रुपए निकल आए. नाना फूशवान भी पुल करोगे बट लिंक्स आई वांट. अच्छा, ऑल टाइम लकी थोड़ी ना रहोगे भाई. पिटी, हाँ ये तो है. आई डोंट थिंक फूशवान आई हैव जपार्ड विद दिस पर्सन लाइट कौन. आई पुल फूशवान बैनर फॉर लिंक्स. मेरे पास 3 हीलर हो गए हैं. मेरे पास बाइलू हो गई है, मेरे पास नताशा हो गई और लोचा हो गया है. 2 टीम इस्तेमाल करनी है. लिंक्स मुझे लगता नहीं इतनी इंपॉर्टेंट होगी. You guys, on the other hand, let me guess. Don't tell me you're here for the Phantom Weasel, are you? Wow! Got it in one! Is this more of your trickery at work? Wait, really? No trickery this time. It was pure luck. His warning letter's been the talk of the town, so I figured that maybe you were asking around about that. Bingo! I plan on writing a column reporting on the latest news about the Phantom Weasel. So, Lyney, what are your thoughts on this infamous thief's reappearance? To be honest, it makes me angry. मेरे पास नहीं है लोचा. लोचा तो भाई बहुत ही मस्त पुल था. लोचा तो इतना स्ट्रॉन्ग हीलर है, मतलब कि गेम ब्रेकिंग हीलर है लोचा. Angry? Why? और सबसे बड़ी बात है कि लोचा अपनी अल्टीमेट के ऊपर जो एनिमी, अगर एनिमी के पास अपने खुद के पास कोई बफ है, कुछ एनिमीज नहीं होते खुद को अटैक बफ दे देते हैं, डिफेंस बफ दे देते हैं, तो लोचा अपनी अल्टीमेट पे एनिमी का बफ हटा देता है, एनिमी को डीबफ कर देता है. लिंक्स नताशा से बेटर होगी, पर उसके लिए तुम्हें लगता है कि इतना बेटर होगी कि उसके लिए क्या कहते हैं प्रीमोस वेस्ट किए जाएं? आई मीन तुमको अगर चाहिए लिंक्स या फूशवान चाहिए तो 100% पुल करो, हम कौन होते रोकने वाले. एक आर्टिफैक्ट पे तो 16% क्रिट रेट मिला है सब स्टैट पे. तो ऐसे सबको नहीं मिलते भाई, सबके साथ नहीं होता. You read his letter, right? The Phantom Weasel claims he's planning something in 3 nights' time at the Opera House. That's the night I'll be performing there. Huh. What are the chances? Wait a minute, you don't think he's after you, do you? Well, if he is, then his warning is clearly a direct challenge to me personally. No, I'm not pulling for Fushuan because I will pull Topaz and Jingliu both. And if he's not, then it's still going to be a huge headache for me. The mere mention of the Weasel's name is enough to scare people off. So once the contents of that letter get out, barely anyone will be showing up to watch my show. But I've been preparing for this for a long time. I'm not about to let him ruin my big day. This leaves me with only one choice. I have to expose the Phantom Weasel's identity before the show begins. Really? So what you're saying is, we might get to see a live duel between a famous magician and an infamous thief? Wow, this has exclusive written all over it. To be honest, I'm not sure if I'll emerge the victor. The Phantom Weasel is a notorious crook, infamous for his inscrutable methods. You're being far too modest, Lyney. I think your magic tricks are even more inscrutable than those of a thief. Pratik, welcome. Thanks for the compliment, though I have to say I don't care much for the comparison. A lot of people liken magicians to thieves because we both have the ability to make things disappear without the person noticing. But there's an important difference that these people overlook. लिंक्स बहुत क्यूट है इसलिए भी पुल कर रहा हूँ. चलो ठीक है. जिंगलियो लेना था, अब इम्बिबिटर बिल्ड करते करते जिंगलियो आ जाएगा. Allow me to demonstrate with a quick magic trick. Here, I have a flower, just an ordinary flower that was picked not long ago. Watch it carefully now. 3, 2, 1. आगन भाई, बाइलू, नताशा, बाइलू. Obviously 5-star healer है यार. It's good! That's the question. Where did it go? Therein lies the difference between us.
Thieves make precious things disappear, but only magicians make them reappear. और पता है यही रीज़न है कि मैं अपना होंकाई का जो अकाउंट है ना एंजॉय कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर प्रेशर नहीं है कि अरे ये भी पुल करना है, ये भी बिल्ड करना है, ये भी पुल करना है, ये भी बिल्ड करना है। मैं आराम से पुल करता हूँ, आराम से बिल्ड करता हूँ, अच्छा बिल्ड करता हूँ, है ना, और ख़त्म। अब मेरा इम्बिबिटर हो जाएगा, फिर उसके बाद मैं मेमोरी ऑफ केओस जो है आराम से ट्राई करूँगा। If I could now invite you all to check your clothes, there might be a surprise in there somewhere. Links HSR, yes. A surprise? Let me see! It's right there! But how? You haven't moved this whole time! What an outstanding trick! Sorry, Lyney, it seems that my previous praise was woefully inadequate. Clearly, magic is the superior art form to theft. ये क्वेश्चन एस्ट्रेक्स मुझसे कल भी किसी ने पूछा था कि बेस्ट 5 स्टार कौन है, ठीक है। अब इट डिपेंड्स, अगर उसके अंदर सारे के सारे हंट कैरेक्टर्स होते हैं तो आसान होता है चूज़ करना, सारे के सारे एरुडिशन होता है तो आसान होता है चूज़ करना, सारे के सारे कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि 300 पुल्स जब तक तुम्हारे होंगे, इट विल रियली डिपेंड कि उस टाइम पे तुम्हारे पास क्या नहीं है, उसके हिसाब से तुम्हें देखना होगा तुम्हें क्या पुल करना है। तुम्हारे पास हीलर नहीं है तो बाइलू पुल करो, तुम्हारे पास शील्डर नहीं है तो जेपार्ड पुल करो, तुम्हारे पास क्या कहते हैं कोई अच्छा खासा बफर नहीं है टिंग्यून के अलावा, ठीक है, तो मेरी यूकॉन्ग नहीं निकली है, वीक है, तो ब्रॉन्या पुल करो, इज सिंपल इज दैट। इसका कोई मतलब ऐसा आंसर नहीं है। अब कोई कहे कि ब्रॉन्या बहुत स्ट्रांग है, ब्रॉन्या पुल करो, मेरे पास ऑलरेडी है, मैं क्यों पुल करूँ। कोई कहे बाइलू बहुत स्ट्रांग है, मेरे पास वो भी ऑलरेडी है, ठीक है। तो इट डिपेंड्स, उस टाइम पे देखा जाएगा कि क्या तुम्हें चाहिए। इसका कोई एक आंसर नहीं है इस क्वेश्चन का। Don't worry, I didn't take offense. I just wanted to take the opportunity to perhaps change some of the preconceived notions you might have about magicians. Since Caesar's death, a lot of people associate magicians with criminality. It can be quite frustrating. I can imagine. Coming back to your trick just now, might I presume that you are well versed in floral symbolism? For example, magicians often use rainbow roses in their flower-related performances to represent passion and romantic encounters. Liked and served. अरे thank you so much. Welcome to the stream. अपने आप को इंट्रोड्यूस करो जरा सबके सामने। बाय द वे, हर 300 स्टैंडर्ड पुल्स पे चूज कर सकते हैं क्या? नहीं, सिर्फ एक बार। हाँ, मामा जी की कंपनी है ना होयो। But you used a Lumidu spell, which, if I'm not mistaken, allude to separations. I'm curious to know if there was any deeper meaning behind this choice. विवेक भाई वेलकम। इम्बिबिटर लूने बिगिनर्स के लिए कैसा है? अच्छा है। Impressive knowledge. It's no wonder you're such a successful journalist. But I'm afraid I don't know the first thing about floral symbolism. I'm just in the habit of using Lumidu spells in my magic. It sounds like something I should look into, though. I'll buy myself a copy of Fontaine's Floral Language Facts when I have some time. But it'll have to wait until this phantom weasel business is behind us. Well noted. In that case, this brings us to the end of our interview. I, for one, am looking forward to the final showdown between you and the thief. Please feel free to get in touch to update me on any further developments. Otherwise, I will of course see you at your show in 3 days' time. But let's hope the phantom weasel is caught by then. भाई अभी राइट नाउ सबसे बेस्ट DPS है इम्बिबिटर लूने। हाँ, वेल बिल्ट इम्बिबिटर लूने, सही बात है। मेरे दोस्त ने उसका ट्रेलर देख के गेम शुरू किया था, उसको मिल गया TL6 पर। हाँ सही, बिल्ड करो, उसको बोलो अभी बिल्ड करे, उसका बहुत अच्छा बिल्ड हो जाएगा। If there's nothing else, I'll be off. You've given me lots to work with here, and I've got no time to lose if I want to write that exclusive piece. I'll see you all later. So, Lyney, are you gonna tell us how you did that flower trick now? I'm afraid that's my little secret. Aww. Well, magicians are entitled to their secrets. But Paimon's really itching to know how it's done. उसको लाइट कोन पे गैम्बल करने को बोलूं? बिल्कुल बिल्कुल भाई, अभी तो उसने स्टार्ट किया खेलना, उसका तो विशेष सेव होंगी। You feel it too, right? So itchy. Not so itchy then, huh? Well, since you're so concerned, how would you like to serve as my temporary magician's assistants and help me investigate? As I promised, I pulled my homie Lune. मैं भी लूने, वो भी लूने, जग लूने लूने लागे। Magician's assistants? Oh, that
वाह, पाइमॉन और ये लिनेट की नौकरी खा गए। Also, it'll bring us one step closer to figuring out how that darn trick is done. Shall we go for it? Excellent. Thank you for putting your trust in moi. The first thing we need to look into is who Caesar really was. If he truly was the Phantom Weasel, that means that the Weasel is dead, and whoever wrote this warning letter is just a copycat criminal. But if he wasn't the Weasel? Well, that'll make things more interesting. It would mean that the Weasel lives, and he's been laying low all this time in some corner of Fontaine. And if we're investigating Caesar, his fiancée Gemma is a good place to start. Word is that she visits the cemetery often, so I asked Lynette to wait for her there. We should make a move. Let's go and rendezvous with Lynette. Okay, let's go. इधर। अरे बाप रे, इतना दूर, इतना ज्यादा दूर। पानी के अंदर तो नहीं है? इधर ट्रेजर होल्डर लग रहे हैं यहाँ पे। अरे यहाँ चलते हैं, इनको मारते हुए चलेंगे। Wind Strider! Fuse is lit! What do we have here? इमेजिन अगर उसको ब्रॉन्या मिल जाए स्टैंडर्ड पर। उसको बोलो कि उस बैनर के ऊपर थोड़ा पुल करे, यूकॉन्ग निकाले। यूकॉन्ग अगर उसकी E6 होगी ना, उसके इम्बिबिटर लूने का बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। You took your time. Sorry, I bumped into the Traveler and Charlotte en route, and we ended up chatting for a while. It's been a while, Lynette. We're working as Lyney's temporary assistants in the investigation of the Phantom Weasel. Thank you. It's good to have you helping. So, what's the situation? Have you seen Gemma? Nope. I've been here a while, and she still hasn't shown up. How bizarre. Maybe it was bad intel. Well, we won't get anywhere by standing around waiting. Traveler, Paimon, let's go ask around. लाइट कौन बोलूँ या कैरेक्टर बैनर? नहीं तो उसको आइडलॉन मिल जाएगा। यार ये तो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। अगर मैं होता पर्सनली उसकी जगह पे, पहले बताओ उसको कितनी पीटी के ऊपर मिला है? इम्बिबिटर लूने कितने पुल करने पे मिला है? उसको कुछ तो क्या कहते हैं आइडलॉन्स मिले होंगे यूकॉन्ग के, या बिल्कुल ही नहीं मिले? Excuse me, good sir. Do you by any chance know a Gemma? Gemma? You mean Caesar's fiancée? Sure I do. What's this about? I'm just trying to get a hold of her because I need her help with something. I heard she comes here a lot. Yeah, she does. Poor thing. It's no secret why either. She's heartsick. Ever since Caesar passed away, she's been coming here once every week to clean his grave. Often she just sits there in front of his headstone, lost in thought. Sometimes she talks to herself. 4-5 पुल्स पर मिला है। यूकॉन्ग ने उसको टिंग्यून मिली है। अच्छा, उसको टिंग्यून मिल गई है। ठीक है, मैं तो कहूँगा कि उसको बोलो अपना एक बार वो पुल कर ले, क्या कहते हैं, लाइट कौन पुल करे, और लाइट कौन मिल जाए तो ट्राई कर सकता है यूकॉन्ग के कॉन्स्टेलेशंस के लिए। I asked her what she was doing once. She said she बाकी wanted to speak to him अगर again. सिल्वर वुल्फ नहीं है और मोनो इमेजिनरी टीम नहीं बनानी तो यूकॉन्ग स्किप की जा सकती है। She knows he's gone and can't hear her from the grave, but she just likes to spend time there, telling her fiancé all about how her life is going. And she's been doing this ever since Caesar passed away? Oh, so 10 years. Wow. Their love must have been really strong. बस 15 दिन तक टैलेंट मटेरियल, 7 दिन तक क्रेडिट, 1-2 साल तक रेलिक्स फार्म करना है और मेरा एम्बिबिटर रेडी हो जाएगा। एग्जैक्टली I'll सही bet. बोला। Caesar's reputation fell apart after his identity was revealed, so no one else visits his grave. Gemma's the only one who still thinks about him after all these years.
I don't know if the mind lives on in the waters after death, but if it does, I'm sure Caesar must be grateful to have someone who remembers him fondly. If I'm honest, I think this is all so unfair to poor Gemma. Her fiancé was a low-life crook. He doesn't deserve someone like her. Anyway, all of that said, she's running later than usual today. Normally, she'd be sitting in front of his grave by now. I wonder if she's okay. अब तो उसका खत आ गया ना, तो she must be thinking कि भाई मेरा बंदा जिंदा हो गया. Well, that's everything I know, I'm afraid. You might have more luck asking some other people. All right, well, thanks for sharing all of this with us. We'll keep asking around. You're welcome. I just hope she'll be able to move on one day. 10 साल हो गए, अब क्या मूव ऑन करेगी? Gracia. Did you hear the news? They're saying the Phantom Weasel's back. You're kidding. Wait, isn't he dead? ये सारे के सारे सुपर साइयन 2 वाला इनका हेयर स्टाइल है, ये देख रहे हो? ये हेयर स्टाइल सुपर साइयन 2 वाला है. एक लट आगे निकली हुई है और एक ऊपर है. I don't know anymore. All sorts of news flying around nowadays. I can never tell what's true and what isn't. But what if, just hypothetically, I mean, what if this weasel's the real deal and Caesar was framed? Called it. Seriously, 10 years ago, on the day it all went down, I said to myself, you know what? This guy's been set up. The Caesar I knew was a good guy. He gave balloons to children on the street, for Pete's sake. What, are we supposed to believe that he was a balloon thief or something? Give me a break. नहीं तो यूकोंग E6 ही बोलता हूँ, अगर 50-50 हार गया तो नेक्स्ट गारंटीड एंड जीत गया तो आइडलॉन इज गुड. एलसी हार गया तो इतना खास नहीं होगा. एलसी में क्या हारेगा? एलसी में ऐसा तो है नहीं कि 2-3 लाइट कोन है वहाँ पर. एक ही है, वो मिल जाएगा, है ना. आइडलॉन वैसे एम्बिबिटर लूनिक आइडलॉन बुरे नहीं है, आइडलॉन अच्छे हैं उसके, बट अभी मेरे ख्याल से उसे लाइट कोन पुल करना चाहिए. पॉन्टेन वालों को फैशन की समझ है. अभी भाई फ्रांस के ऊपर बेस्ड है ना. Oh, please. Weren't you the one cursing his name to high heaven when the police announced the news? You were all, oh, that gosh darn lousy son of a, oh, you think you know a guy, or words to that effect. Wait, did I say that? I don't seem to recall. Hello there. Sorry for disturbing you, but I couldn't help but notice you were discussing the Phantom Weasel. We're actually quite interested in this topic as well, but we're struggling to get to the bottom of it. Do you think you could spare a moment to tell us a little bit about Caesar? You've come to the right people. Yep, I was there. Back when Caesar used to perform magic tricks on the street. He was a great magician. The best trick I ever saw him do was pop a transparent balloon, only for a whole bunch of doves to fly out from the inside. वन पीस का लाइव एक्शन देखा? नहीं भाई. I was right up close and didn't blink or look away once. But for the life of me, ट्रेलर देखा I है? still don't have the faintest clue how he pulled it off. Really incredible stuff. I saw him perform too. He always used to bring some gifts along for the kids who came to watch his show, and he'd hand them out after he was done. Sometimes he even got the kids to write their wishes down, and then he'd make the items on the wish list appear in his next show. Huh. He doesn't sound like such a bad guy. But after he died, there were also rumors that he used the wish list to find out what was precious to people, with the intent to steal it later. As I'm sure you know, the Phantom Weasel would steal just about anything from anyone. Whatever the case, now that the weasel is back, Caesar's become a hot topic once more. I bet Gemma must be pleased. If Caesar's name gets cleared, maybe it'll finally give her some solace after all this time. Suzine, welcome, welcome. देखना टाइम मिले तो रिव्यूज तो अच्छे आ रहे हैं, तो उसके लिए वो देखना जरूरी नहीं है, एनिमे देखना जरूरी नहीं है पहले. No, speak of the devil. That's her over there. If you've got any more questions about Caesar, she's definitely the one to ask. So that's Gemma. ये तो बूढ़ी हो गई यार. Is it just Paimon, or does it look like something's wrong? हाँ, उसका पति मरा हुआ है यार. Wait. It looks like she's injured. Come on, let's see if she's okay. चाइल्ड अच्छा DPS है. यस. Hi there. You're Gemma, right? Who's asking? Don't be afraid, we mean no harm. It
Looks like you're injured. How bad is it? Thanks for your concern, but you didn't answer my question. Who are you, and what do you want with me? एक फेमस मैजिशियन की बीवी एक दूसरे फेमस मैजिशियन को नहीं जानती. My name is Lyney, and this is my sister Lynette. My name's Paimon, and this here's the Traveler. We're investigating the Phantom Weasel. मुझे बड़ा अजीब लगता है जब मुझे कोई ट्रैवलर बुलाता है. The Weasel posted a warning letter this morning. If he still lives, that means that Caesar was falsely accused. एनिमे एपिसोड 1 से 53 तक अडेप्ट हुआ है बस. ठीक है, 950 एपिसोड और. क्या लगता है गेंशिन एनिमे का अपडेट कब तक आएगा? पता नहीं भाई, नो आइडिया. बिल्कुल उस मामले में बिल्कुल शांत है लोग. You knew Caesar better than anyone else. So if you're willing, we'd love to hear what you think about all this. I promise you can trust us. We won't hurt you. In fact, we'll do all we can to keep you safe. I never believed that he was the Weasel. Huh. I suspected as much. Okay, so going back 10 years, do you remember anything strange in the weeks leading up to the accident? Did Caesar have a falling out with anyone, for instance? No, not that I know of. एक साल होने को आया अनाउंसमेंट हुए. हाँ, काम चल रहा होगा, काम चल रहा होगा. Got it. All right. Sorry for disturbing you. If you don't have any more questions, please leave. I want to be alone with him. भाई जो स्टूडियो एनिमे बना रहा है ना, वो स्टूडियो बड़ा लेजेंडरी है, तो उसका होगा ही बहुत अच्छा. कल नाइट में ऑन किया आईडी तो मालूम पड़ा डेली कमीशन भी कलेक्ट नहीं किए थे आपने. अरे मैं भूल गया कल. तो तुमने फिर फाइनली उसको कलेक्ट किया कि नहीं किया? मैं भूल गया. She's lying. She definitely knows something. That's fair. We're just a bunch of strangers who showed up and started questioning her about things that happened a whole decade ago. It makes sense that she'd be wary around us. In any case, I doubt we'll get any further here, so let's call it a day. Meet me outside Hotel de तब Boer किया कल नाइट tomorrow, में. and then we'll start the next step थैंक of our यू, plan. थैंक यू. आरिगातो गोजाइमास. किधर जाना है? वेट टिल द नेक्स्ट मॉर्निंग. मॉर्निंग तो हम कर देंगे अभी. होगी मॉर्निंग. होंकाई स्टार का भी एनिमे बनाया वो डान हंगवर से डान फेंग वाला सॉलिड था. हाँ, वो तो बल्कि इन्होंने खुद बनाया. होयो एनिमी के नाम से उन्होंने खुद का अपना स्टूडियो बना रखा है. होयो एनिमे या ऐसे करके कुछ. अरे नेक्स्ट मॉर्निंग. ओहो, ओके. C4 येलान पागल है भैया. C4 येलान पागल है. किसकी C4 की? कहाँ जाना है? अच्छा, वापस शहर में. 90% लोगों का एक ही एक्सक्यूज है, बहुत लंबा है, 1000+ एपिसोड. बट एक बार मांगा से कैचअप हो गए तब लगता है और क्यों नहीं है. भाई मांगा कौन पड़ेगा इतनी सारी? यार देखो, टाइम वाली बात है. 1000 एपिसोड देखने का टाइम नहीं है जीवन में. Over here. 20 मिनट में स्पाइरल खत्म. वाह. Lynette's not joining us today? I've had her follow Gemma and see if we can make any inroads with her. They should be at a cafe right now. Still, I don't think that Gemma's likely to open up to us. So, we need a contingency plan. Today, we'll be looking into a guy named Lorenzo, Caesar's former pupil and assistant. When Caesar passed away, लॉकडाउन में तो टाइम ही टाइम था लोगों के पास. discovered in his home were confiscated and returned to their rightful owners. But Lorenzo was the only one privy to all his magic secrets, and he inherited his craft. Before long, Lorenzo was the next big magician in town, his fame surpassing even that of his master, and it made him very wealthy. He's since left the magic scene though, and these days, he's a wealthy businessman with his fingers in a lot of different pies. I had to pull a lot of strings, but I managed to get him to agree to a couple of drinks with me. Be warned though, I hear he's got a hair-triggered temper. We'd best be careful. अरे अब टेम्पर है तो क्या हुआ? हमारे पास शक्ति है.
चपेड़े चपेड़े मार के पीट देंगे उसे। You neglected to mention that you were bringing 2 other people with you. ओहो क्या भारी आवाज है। एक बंदे ने बोला था नारुतो देख 700 एपिसोड, हिम्मत करके उसको देखा, बहुत पसंद आया, एक टाइम पे फेवरेट था until I saw One Piece। नहीं मैं ये नहीं कह रहा बुरे हैं, I'm just saying कि टाइम नहीं है भाई। My तुम्हारे पास apologies. होगा These टाइम, two are हमारे my पास नहीं है। assistants. When they heard that I was meeting with the former magic maestro himself, they begged and pleaded with me to bring them along. And if it's no trouble, a couple of autographs would really make their day. Oh, forget the pleasantries, just sit. नारुतो के मैंने भी कम से कम Get a load of this guy. 100-150 एपिसोड देखे हुए हैं। Says, but पता है कब देखे he थे? looks pretty happy about Lyney stroking his ego. 10 साल पहले। I only agreed to meet since we're both magicians. Do me a favor and cut to the chase. I have more important things to do than drinking. ये तो दिन शुरू होके कब खत्म हो रहा है पता नहीं चल रहा। नारुतो कैसे देखें? वही तो। Much obliged, sir. As it happens, the matter I want to address is also related to magic. इल्का क्वेस्ट कर दिया क्या? नहीं अभी नहीं किया। Yesterday morning, a warning letter from the Phantom Weasel appeared on the entrance to the Opera House. He claims to be planning something for the same evening that I'm scheduled to do a magic show there. As such, I believe that I may well be his target. I have to get to the bottom of this to ensure that my show can go ahead as planned. Naturally, any investigation into the Weasel starts with a few questions about Caesar, who... What is there to investigate? Caesar was the Weasel and he's been dead for 10 years. So what if some sick creep thought it'd be funny to write a warning letter? It changes nothing. Are you trying to tell me you actually bought it? Please, sir, no need to get so worked up. I do concede that a copycat is but one possibility. Possibility? It's a fact, Lyney. Look, my patience is limited, so listen carefully while I'm still willing to put up with you. Okay. The Weasel is dead. Period. Everyone knows that, so do yourself a favor and quit this investigation. It'll lead you nowhere. Look, if this affects your magic show in any way, I will personally compensate you for any losses. तू क्यों करेगा? ना तो तेरा मैजिक शो है, ना तू उसको स्पॉन्सर कर रहा है। Oh, sir, I'm honored, really. But this isn't about finances for me. अल्ट्रा की एलान 60k प्लस डैमेज कर रही है पर सेक। वाह। My pride as a magician is what's at stake here, Lorenzo. Copycat or not, this person has thrown me the gauntlet, and I must meet their challenge head on. Your pride? Don't mince words with me, boy. Just tell me what exactly are you seeking to do? 20 मिनट में 2 एपिसोड, रोज का 40 मिनट नहीं है। जल्दी क्यों करनी है? धीरे धीरे देखो क्या जा रहा है। क्योंकि भाई और भी हैं। तुम्हें लग रहा है 40 मिनट, तुम्हें लगता है कि नारुतो के अलावा और कोई काम नहीं है या हमारे पास और कोई शो नहीं है देखने के लिए। ये तुम्हें लग रहा है। अभी तुम आने दो जरा, हमारी एज में पहुंचो। जब जिम्मेदारियां बढ़ेंगी ना लाइफ के अंदर, तब पता चलेगा कितना टाइम है कितना नहीं है। मेरे 20 एपिसोड खत्म नहीं हुए अब तक उसके। स्पाई फैमिली के लास्ट के 2 अब तक रह रहे हैं, मैं देख नहीं पाया उनको। तुम सोच कह रहे हो 1000 पूरे कर दूं। I want to find out the Phantom Weasel's true identity. I अरे have कुछ to know भी, for myself नारुतो, what वन really पीस, happened 10 व्हाटएवर। years ago. ऐसे तो फिर ब्लीच भी देखना है मुझे। हैं ब्लीच के 20 मिनट, ब्लीच के 20 मिनट, नारुतो के 20 मिनट, इसके 20 मिनट उसके। नेटफ्लिक्स की मेरी मंथली सब्सक्रिप्शन जा रही है, वो नहीं देख पा रहा मैं। ठीक है, वहाँ पर इतने सारे देखने के लिए पड़े हुए हैं भाई, पूरे दिन यही करते रह जाएंगे। मेरे यूट्यूब के ऊपर 5000 वीडियोस वॉच लेटर के अंदर सेव हैं। अब तुम बताओ। मैं भी जॉब करता हूँ भाई, ज़िंदगी मैं भी काट रहा हूँ। अच्छी बात है। अभी क्या कहते हैं, हर किसी के पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अलग अलग लेवल की है ना। तुम समझ रहे हो? दिन में सबका 24 घंटे ही हैं। मैं अपना यूट्यूब भी करूँ, फिर मैं क्या कहते हैं रील्स बनाने का टाइम मुझे मिल नहीं रहा, एडिट करने का टाइम मिल नहीं रहा ना। हर किसी का अलग अलग होता है। तुम सबके अपने नज़रिए से नहीं देख सकते ना कि तुम्हारे पास 20 मिनट है तो सबके पास होंगे। What would that accomplish? And what do the events of 10 years ago have to do with you anyway? Look, you of all people should know that a magician never reveals their secrets. And in any case, dead men don't talk. So if you really care about your magician's pride, then you'll forget about Caesar and move on. हाँ, अगर ये है कि जीवन में सिर्फ वन पीस ही देखना है तो फिर मैं समझ सकता हूँ। ठीक है, फिर मैं समझ सकता हूँ कि हाँ यार, अगर खाली वन पीस फिनिश करना है तो डेफिनेटली दिन में 40 मिनट
क्या कहते हैं दे के अपना सीरीज फिनिश कर देंगे। लेकिन वही ना, एवरीथिंग एल्स डिमांड्स टाइम। मेरे पास कम से कम 300 किताबें पड़ी हैं जो मैंने खरीद के रखी हुई, जो मुझे पढ़नी है। 300 किताबें, ठीक है। उसके बाद 5000 के करीब यूट्यूब पे क्या कहते हैं वॉच लेटर की वीडियोस है जो मैंने सेव करके रखे हैं देखने। एनिमीज इतने सारे हैं जो सेव करके रखे हैं देखने, ठीक है। फिर मुझे अपना काम भी करना है ठीक है। फिर उसके बाद नेटफ्लिक्स के ऊपर, अमेजोन प्राइम के ऊपर, डिज्नी हॉटस्टार के ऊपर, सब पे शोज लाइन लगा के पड़े हुए हैं, ठीक है। फिर मुझे अपने यूट्यूब की क्या कहते हैं चैनल भी चलाना है। अब तुम बताओ क्या कब देखूं मैं? तो मुझे प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा ना। उस प्रायोरिटी लिस्ट के अंदर फिर ये वन पीस और नारुतो बहुत नीचे आते हैं। इस तरीके से समझो। Uh-oh. This is getting awkward. देविस भाई वेलकम वेलकम, हेलो। Renzo? Is that? Oh, it is you! I know that big, booming voice anywhere. What's up, my man? Want to grab a drink with me? ये वन पीस का सीन कहाँ से घुस गया? अरे वो लाइव एक्शन आया ना अभी इसका। Another day, I'm busy. Oh, come on! You can't be all business all the time. वेलकम बैक प्रतीक, वेलकम बैक। You know what they say? वही स्टोरी Live क्वेस्ट चल रही है यार। fast, die young. You gotta learn how to kick back and relax once in a while. क्या वॉइस एक्टिंग है? वॉइस एक्टिंग अच्छी है। एनपीसीज की वॉइस एक्टिंग बहुत अच्छी है। If I wanted your life advice, I'd ask for it. Now get out of my face and go be drunk somewhere else. Sorry, my good sir. I don't believe I've had the pleasure. Oh, hey! Edmondo. Edmondo. He and I are business pals. We worked together a bunch of times. This is your first time meeting him? Oh, he's always like this. Foul-mouthed and hard-nosed. Never heard a kind word out of this guy the whole time I've known him. And he wonders why he can't get a girlfriend, despite being, what, pushing 40, 30, something? Anyway, point is, a lot older than when he first got rejected by the भाई girl he बंदा was क्या वॉइस into. एक्टिंग कर रहा है। And he's still into, from what I hear. क्या वॉइस एक्टिंग कर रहा है? इसको पेमेंट कुछ ज्यादा अच्छी मिल गई लगता है। ये कोई नया वॉइस एक्टर लग रहा है जो कह रहा है कि अब मुझे मौका मिला मैं दिखा के रहूंगा। प्रतीक भैया कल आप मिस कर दिए। वन पीस लाइव एक्शन आया है तो उसमें इतना क्या चर्चा चल रहा है? क्या बोल दिया कि कब देखोगे वन पीस? मैं ओरिजिनल वाले की बात कर रहा था। मैं सो जाता हूँ 11:30 के अराउंड, 20 मिनट में स्पाइरल कंप्लीट। अरे इस बंदे की वॉइस एक्टिंग पे कुछ कमेंट करो यार। क्या वॉइस एक्टिंग कर रहा है बंदा ये? Shut up and get out of my face. Another word out of you and you can forget about doing business with me ever again. Do I make myself clear? Sorry, I may have had a little too much to drink. All right, I'm gonna leave. Don't work too hard. एनपीसी गया भाड़ में। अरे यार I think it's high time I made a move as well. अजिंक्य ने बोला ना कि हम मजेदार हो If you रही really है। want to जक्कास investigate डेविस ने this, बोला। Lyney, be my guest. गेंशिन का स्टोरी क्या है ये? एचएसआर का स्टोरी, एक का बहुत बड़ा एंड एक्स्ट्रा डायलॉग, एक का इतना छोटा स्टोरी, आंख से आंसू आ जाते हैं। हर किसी के अपने प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट है। But if nothing good comes of it, don't say I didn't warn you. Well, that fell to pieces in a rather spectacular fashion. Any thoughts? दारू भी क्या है इसका भी है। हाँ इसे कहते हैं मेथड एक्टिंग। Totally. And what was all that about compensating you for your losses? Why would someone you just met make an एग्जैक्टली, offer मैंने भी like यही बोला। that? मैंने भी यही बोला कि ये क्यों कॉम्पनसेट करेगा। पक्का किसी ने बोल दिया होगा कि वन पीस का एनिमे कब देखोगे। हाँ मतलब समथिंग अलोंग द लाइंस ऑफ दिस। He's gotta be hiding something. And not like Gemma. She was a little suspicious, but this guy's definitely covering something up. I think so too. We need to look into Lorenzo more closely. That guy Edmondo seems to know a thing or two about him. He only just left. Let's see if we can catch up with him. 1.3 में क्या स्टोरी था बताओ? इतना छोटा स्टोरी 1.2 में फिट हो जाता। वो मैं क्या ही कह सकता हूँ। अब वो अपने तरीके से पेसिंग कर रहे हैं एचएसआर की स्टोरी का। अभी तक तो मैंने ट्रेल ब्लेज क्वेस्ट की ही नहीं। ट्रेल ब्लेज क्वेस्ट भी करनी है मुझे। कहाँ जाना है? बाहर? ऊपर जा सकते हैं?
Argalia. Rodomonte Renaud. Forget about me. Boss of Hotel de Board. मैं तो बस गेंशिन खेलता हूँ, कुछ और स्टार्ट किया तो ओवरलोड हो जाता है। मैं तो एक गेम जो है पीछे पीछे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बैकग्राउंड में रिकॉर्डिंग चल रही है मेरी, वो गेम है एवरीबडीज गॉन टू द रैप्चर। उसके 4 पार्ट्स मैंने रिकॉर्ड कर लिए, एडिट करके डालूंगा इंडी वाले चैनल पे। आर्कन भाई थोड़ा फ्रेंच बोल के दिखाओ, थोड़ा फ्रेंच बोल के दिखाओ। ओके। बोंजूर मैडमोजेल, je m'appelle Arkhon, je suis streamer। इतनी आती है। You okay there? Who are you? अभी तो मिले थे। Oh, it's you guys. Don't worry about me. I must have had one too many. I said way too much back there, didn't I? Yeah, I nearly talked myself into complete financial ruin. Note to self, no more drunken chats when Lorenzo's around. So he was serious Thank you, thank you, about thank you, thank threatening you. to cut you off? मैंने 6 महीने फ्रेंच सीखी थी I knew he was a bad egg. 2011 के अंदर भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी से। 6 महीने का कोर्स था और क्या कहते हैं वो कुछ खास चला नहीं, तो बहुत ही बेसिक सीख के फिर बंद कर दिया था। Hey! Keep your voice down. उस टाइम मैं बोलता था je m'appelle Ashi, je suis étudiant। je suis étudiant का मतलब I am a student। Don't go prying into Lorenzo's personal affairs. Bad things happen to people who ask too many questions or make an enemy out of him. पूरा 1.3 का स्टोरी पे 2 मिनट का कट सीन चला था। अब तुम्हें क्या लग रहा है, तुम्हें ओपनहाइमर दिखाए हैं? What kind of हाँ लेकिन हाँ bad छोटा तो things? था। You're right। Don't even ask. I'm sorry. I'm gonna have to cut this conversation short. I'm not crossing that line again. कुछ समझ नहीं आया बट सुन के अच्छा लगा। ओके वसूली भाई। And take it from me, trouble with Lorenzo is one thing you don't need in your life. You saw him flare up back there. I don't know what you said to him, but clearly it touched a nerve. That's not a good sign. You're too young for this. Don't get in over your head. I'm leaving. मेरे स्कूल में ज़बरदस्ती सीखी थी फ्रेंच एंड संस्कृत, अब सब भूल गया, इसलिए कहते ज़बरदस्ती कुछ नहीं सीखना चाहिए। गाइस लाइक दबा देना किसी ने नहीं किया हो तो। Once again, I'm asking for your likes. There he goes. What do we do now, Lyney? मैंने बोला 2 मिनट का कट सीन अच्छा था, नाट की छोटा था। अच्छा। Shh. I think we're being watched. Someone was listening in to our whole conversation. ओह पीछे एजेंट खड़ा है। Don't say anything and don't look back. Any altercation in the city will attract the guards. We'd better take this elsewhere. Okay, let's go. कहाँ खड़ा था? यहीं कहीं खड़ा था ना? एनी, अरे भाई इतना आगे? इतना दूर जाना है? अरे यहाँ पे क्वेस्ट भी है, बाद में लेंगे। जो स्कूल वालों ने नाम एनरोल You कर दिया था। followed us a long way. Why don't you come out and introduce yourselves? ओ भाई So साहब, Men you're in Black। Lyney. And where's your sister? Ain't she with you today? स्मूथ फेस पचीनो। स्मूथ फेस, ये किस पे पन है, समझ गए ना? स्कार फेस, एल पचिनो की फिल्म थी। Save us the trouble and go fetch her for us. Let's not drag this out. Paimon doesn't like the tone of your voice, mister. Who sent you, huh? Save your questions, missy. पेंटर You डिनीरो। ain't gonna need answers where you're going. Capiche? कपीश। पेंटर डिनेरो, पचीनो डिनेरो, बाकी कौन है? कैप्रियो। Looks like we can't avoid this fight. Now, I'm not the strongest fighter, so I hope you're ready to back me up. Don't worry, we got this.
अरे और कौन कौन है? अरे ये कहाँ से आ गया? Now disappear. अरे कहाँ से आ गया? Busted. The wind knows me. I'm fine. Curses. They're tougher than we thought. Smooth face Pacino. Vision Painted in wielders are arrow. always trouble. Intimidation ain't gonna work like it did on the lady. Come on, let's scram! अच्छा द लेडी, वो जो बंदी थी, समझ गया. Hey, wise guys! We ain't through with you yet! Oh, they got away! Did you catch what they said just before they left? Something about intimidating someone else. भाई क्विक स्टार्ट लाओ कोई इवेंट के लिए. मेरी तो 1.1 से स्टोरी बाकी है. किसमें? HSR के अंदर. एस्ट्रिक्स ने पेंटर डिनर पेंटर डिनर. Sounds like they just wanted to rough us up as a scare tactic, and they've already done it to someone else, but who? You're right. She was injured when we saw her yesterday, and she acted like she had something to hide. Maybe she was too Men in scared Black. to tell us the truth because those guys had threatened her. तो उसमें ऑटो स्टार्ट वाली क्या बात है? खुद स्टार्ट कर लो. ऑटो स्टार्ट क्या करेगा उसमें? Well, if that's the case, she should be more willing to open up to us once she learns that those thugs won't be bothering her anymore. पाइमॉन मिसी. Let's head back to the cafe and see if we can get any information from her. ओके कहाँ जाना है? कुछ ज़्यादा लंबा लंबा नहीं घुमाते. यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ. वेलकम बैक रिसू, वेलकम बैक. अरे इवेंट में गेंशिन में क्विक स्टार्ट है ना, मतलब इवेंट बिना प्री रिक्वेस्ट स्टोरी के कर सकते हैं, वो वाला क्विक स्टार्ट बोल रहा हूँ. अच्छा Gemma? You again. What is it this time? We just ran into the men who've been threatening you, and we gave them a taste of their own medicine. So, you can relax now. We're here to protect you. What? Why? I didn't tell you anything. Why would they come after you? Sounds like they're no strangers to you. That's putting it mildly. I know them all too well, and I hate them with every fiber of my being. It's been 10 long years, and still every time I try to look into Caesar's death, they show up and warn me not to do anything stupid. ये तो उसी के बंदे लग रहे हैं फिर इसका मतलब. How do I know I can जो बंदा है trust you? सीजर का असिस्टेंट. Do you really think you can get to the bottom of it all? And why are you doing this? I'm afraid I can't reveal all the details just yet, but I can promise you this. I will expose the Phantom Weasel's true identity. Because you see, this is a personal कैसा लग matter रहा है of the quest utmost अभी तक? importance. ओके I give you my ठीक है. word. Trust me. Okay. How can I help you? I've heard that Caesar used to have a magic workshop where he kept a lot of his personal effects. If possible, I'd like to take a look at them. Do you know where it is? The Fleuve Sonde. But the place was sealed up by the police after his death, and no one's been there since. I also know that the Fleuve Sonde is dangerous territory. Lots of hostile groups lurking around. If you're serious about going there, please be careful. Understood. Lynette, you stay here and take care of Gemma. Don't let her come to harm. Got it. But if I'm staying here, I'm ordering dessert. I mean, bon appetit. But stay sharp, too. They're likely to come for you while I'm away. Okay. All right. Power saving mode off. I'll start taking this more seriously now. आपको गेंशिन के लाइव वॉलपेपर कहाँ मिलते हैं? गूगल कर लो गेंशिन लाइव वॉलपेपर, मिल जाएंगे. Whatever you do, please be careful. If anything happens to you because you're investigating... With me here, nothing. Okay, let's go. नीचे जाना. यहाँ पे.
अंडरग्राउंड जाना है क्या? अच्छा बिल्कुल ही अंडरग्राउंड जाना है, तो यहाँ चलते हैं। तो और नीचे नहीं कर रहा यार, तो वो तो ठीक है। मुझे तो कोई रास्ता नजर अंदर नीचे किसी को आ रहा है या थोड़ा घूम घाम के जाना पड़ेगा? ये यहाँ से जाना पड़ेगा। ओ यहाँ से भाई गूगल करके देख लिया क्या वियर्ड वाइफू टाइप वॉलपेपर है भाई, उसमें ना वो सर्च करना पड़ता है, स्टार्टिंग में ऐसे ही आते हैं, ठीक है, फिर उसमें से ना ढूंढना पड़ता है, बहुत सारे देखने पड़ेंगे तुम्हें फॉरवर्ड कर करके उसमें से 2-4 तुम्हें ढंग के मिलेंगे। मैं अपने वाले दिखाऊँ मेरे पास कौन कौन से हैं? एक तो मुझे ये मिला था, ठीक है, और दिखाता हूँ, ठीक है। दूसरा मेरे को ये मिला जोंगली वाला, ये लाइव क्यों नहीं चल रहा मुझे समझ नहीं आ रहा। अरे लाइव काम क्यों नहीं कर रहा? एक ये मिला क्ली का, सिटी में यहाँ मिल गया। एक क्ली वाला मिला मुझे, ठीक है। एक मुझे मिला ये वाला जोंगली का। अरे ठीक है, और बाकी फिर काजुआ का था जो मैंने लगा रखा है। जोंगली का ये वाला भी लाइव है, हाँ अब आया ना लाइव, ये देखो ये लाइव है जोंगली का। वेबसाइट सेंड कर दो यार, याद नहीं, मैंने गूगल पे सर्च किया और पहले जो 2 लिंक आए ना उन्हीं में सर्च करता गया, है ना। एक ही जोंगली वाला है, पर फिलहाल मैंने काजुआ वाला लगा रखा है, वो ज़्यादा मुझे बेटर लगता है, ये वाला। ठीक है, कहाँ जाना है? If Gemma gave us the right location, then the workshop should be right nearby. Huh. Looks like these boxes are blocking the entrance. Let's shift them away first. फालतू जोंगली का अच्छा तो है, फालतू क्या है? There we go. It should be just down here. वो वाइफू वाले से तो बढ़िया ही है। वाइफू वाले बड़े अजीब अजीब है भाई, बहुत अजीब अजीब है, मैं तो दिखा भी नहीं सकता किसी को। ठीक है। Time to act, body and mind. यहाँ पे चेस्ट है कोई? कई बार चेस्ट होती है मिस कर देते हैं। अबे अरे ना, यहाँ कोई चेस्ट नहीं है। Time to act. हैं? अच्छा, So this was Caesar's workshop. Nothing suspicious here, just normal magic props. Let's head in further. गुब्बारे गुब्बूरे रखे हुए हैं। Body and mind. What was that? Oh, is this one of Caesar's gadgets? Guess we must have triggered some sort of device. Ooh. Gotcha. Here comes the catch. Rain cutter. Time for a light jump. अरे कहाँ गया मैं ये? Look, the doll in the box is glowing. इन्हें ही मारना पड़ेगा।
written on the card on this doll? Let's take a closer look. रुक यार, जगह चेक करने दे और भी देखते हैं यहाँ आसपास क्या है। कुछ ऐसा खास नहीं है। ये लिमिटेड डोमेन मस्त है। ओके, लेट्स सी। ओके, और ऊपर क्या है? Looks like we've reached the end of this route. Shall we try a different one? अरे चुप कर पाइमॉन। These magic boxes are moving. What do we do? One of them looks different from the rest. Let's investigate. Take it easy. शॉप रीसेट हुई है ना, 5 पुल्स करके आता हूँ। अच्छा, करो करो करो, मैं भी निकालूंगा। डार्क सोल वेलकम। अरे वाह, क्या जगह बनी हुई है। That's weird. Have we reached the end already? गाइस लाइक दबा देना। There's nothing here. Maybe this was a wasted trip. लिनी मिल गया एक्सीडेंटली कुछ नहीं होता। देयर आर नो एक्सीडेंट्स। This place seems a little too ordinary for a magician's workshop. There's a distinct lack of mystery. We've triggered quite a few devices on the way here. I'm starting to wonder whether Caesar built this whole place as one big, elaborate magic contraption. If so, then there must be more to this place than meets the eye. Maybe a hidden room somewhere. अंधकार आ गया, कहाँ पे? Aha! If I just move this book, then hopefully... And... presto! A secret passageway! How did you know? शॉप परचेज के लिए स्टारडस्ट निकाल रहा था। 10 पुल्स में 16 पेटी पर लेनी मिल गया। मेरी गारंटीड गई। I'm a magician too, and apparently great minds really do think alike. Looks pretty big inside. Let's head in and take a look around. सामने चेस्ट पड़ी है। ओरे Busted. Rain out. Mine's your fate. Know my sword. Let me weave you a fire hazard. और भी है कोई? ये कौन सी जगह है भाई? अरे यहीं से आया हूँ क्या मैं? हाँ, यहाँ से आया था। ओके, लेट्स गो। यार मुझे भी क्या कहते हैं शॉप से वो करना परचेस, पर मैं शॉप खोल क्यों नहीं पा रहा? ओह, मैं डोमेन के अंदर हूँ। ये भी अलग पंगा है। डोमेन के अंदर शॉप नहीं चलती। चलनी चाहिए यार, शॉप तो चलनी चाहिए डोमेन के अंदर। ओके प्रतीक, थैंक यू फॉर कमिंग। वेस्ट जाते पुल्स वेपन बैनर पे, कैरेक्टर पे पीटी ही बिल्ड हो जाती है, इसलिए हाँ भरोसा नहीं था इतनी जल्दी 5 स्टार मिल जाएगा। Take it easy.
Game's up. Fun's over. Fallen leaves, adorn my night into the wind. And voila! Fuse is lit! Ha! अच्छा शॉप चल जाती है Why अभी did कर you देखता हूँ stop, Lyney? Is there some device in that box? Huh. It just looks familiar somehow. Let me check this out for a second while you guys go on ahead. If anyone makes a major discovery, let's rendezvous here. All right, see you in a bit. चेक करता हूँ क्योंकि विश लेके तो रख लूँ कम से कम मैं शॉप ये मेरी पाइमॉन्स बार्गेन है ना यहाँ से मुझे निकालनी है विशेष यहाँ से मुझे चाहिए थे ये क्योंकि बंद हो जाते हैं ओह अच्छा ये निकल गए स्टारडस्ट एक्सचेंज में भी आए होंगे यहाँ से चाहिए थे बाकी सब तो ठीक है जरूरत नहीं है अभी 12 यहाँ हो गए चलो यहाँ पुल करते हैं थोड़े से हाँ स्टैंडर्ड पे 5 पुल्स कर रहा हूँ भैंस की बट ये गेंशिन वालों ने लिनी को क्या खिलाकर बनाया है बहुत डैमेज मारता है हाँ सब C2 कर रहे राइडन भाई 4 साल में अगर C2 नहीं किया फिर क्या फायदा राइडन को एक 4 स्टार भी नहीं मिला क्योंकि मुझे 4 स्टार अभी भी मिला था शांगलिंग मिली थी उसके बाद 2 विशेष और किए और 5 अभी के 5 2 7 3 के अंदर एक 4 स्टार और मिल जाएगा मुझे 4 स्टार कौन कौन से मिल रहा है शांगलिंग मिली शांगलिंग से पहले मुझे रस्ट मिली 4 स्टार उससे पहले भी एक रस्ट और 2 रस्ट एक साथ देख रहे हो एक रस्ट दूसरी रस्ट ड्रैगन्स बेन चलो आगे करते हैं ये कौन सी जगह है अच्छा यहाँ से तो हम आए हैं Take it easy. ये नहीं खुलेगा nope. एक ऊपर जाना है एक यहाँ है यहाँ भी कुछ नहीं है और नीचे तो भी नहीं है वो रहा मैं तो मेरा तो लक था C1 हो गई फर्स्ट बैनर में सेकंड टाइम आ रही है राइडन जब से मैंने स्टार्ट किया गेम अच्छा ओके रिशु थैंक यू फॉर कमिंग पढ़ो 4.3 तक हो जाएगा 20 के प्रीमो जेम्स इजीली मैं भी राइडन कॉन्स पे जाऊंगा फिर हो जाएगा तो बढ़िया जाओ ओके पजल ओके ओके ये पजल तो सुमेरू में बहुत किए मैंने ये पजल तो सुमेरू में बहुत किए फिर से करनी है Don't tell me. Nah. Take it easy. Wow! There's a hidden room here! गुब्बारे ही गुब्बारे Let's see! Oh, this bookcase is full of Caesar's own notes! He wrote a lot about the principles of magic. Whew. Much too advanced for Paimon. मैं भी चलता हूँ गेस्ट को पिक करने जाना है कौन से गेस्ट को पिक करना है Hey, look! अच्छा गेस्ट को Caesar's diary on the table? This book's thick as a brick! Let's take a peek inside it, shall we? पढ़ना पड़ेगा At one of my shows a few days ago, a child asked me how I pulled candy out of my hat.
एक मिनट होल्ड कर. As a joke, I told the kid that the hat has a built-in wish-granting machine. Next thing I know, today a whole bunch of kids were pestering me to pull all sorts of things out of the hat. So I told them another white lie. The machine needs time to power up, but in the meantime, Waiting for you Isle can Quest. write your wishes down. अभी तो ये बहुत लंबी चल रही है, देखते हैं. Well, they took me up on that आज offer होगी या कल करेंगे. enthusiastically. As I write this, I've only just got back from running around all over town, buying the things they wanted. Boy, are my legs sore. I wound up saving very little this month, but that's not a major issue. I now have a bigger problem. How am I going to hide all these things inside my hat? लूने का क्वेस्ट आया तो है शायद, मैंने भी खोल के नहीं देखा. आया होगा, कल तो नजर नहीं आया था. 2 children came to talk to me after today's show. I don't know why they were out on their own. They looked much too young to be unsupervised. I do hope they got home safely. Anyway, they said that they wanted me to teach them how to do magic. It's not uncommon for children to ask this, of course, but I've never seen any of them as serious about it as these two. लिनी और लिनेट होंगे और कौन? I told them that learning magic is very hard work, but that didn't faze them at all. It's like they already knew. It seems like something's bothering Lorenzo lately, but he won't open up to me about it. Surely he's not upset that I agreed to teach those 2 children. I'll have to talk him around. Oh. I have a good feeling about those kids. They're naturally talented, and it seems like they're not new to the world of magic. भाई लिनी और लिनेट ही हैं और किसी बात हो ही नहीं सकती. और अगर ऐसा है तो लिनी को बताना चाहिए था कि वो सीजर को जानता है, उससे अंडर उसने मैजिक सीखा है. They have all sorts of fantastic ideas. All I'm really doing is helping them develop a more professional standard training plan. They wanted to call me master, but I told them they absolutely mustn't. Any magician worth their salt could have taught them what I have. They're the geniuses here. Compared to them, I don't deserve to be called any sort of master. With time, I have no doubt that they could become far greater magicians than I. My only concern is why they're so mature for their age. I fear they've had to grow up too fast. I don't dare to imagine what they must have been through. Gemma thinks so too. She doesn't like being around them. Says that their eyes are too piercing. They don't bother me, but then again, I've never been the sharpest tool तो in the अगर shed. जैमा भी जानती तो जैमा को तो पहचानना चाहिए था लिनी लिनेट को. It's nearly time for me to go on tour. I asked the 2 kids if they'd like to come with me, but they shook their heads. I once overheard them talking about their father and their mission. ये तो लिनी लिनेट ही हैं. Sounds like their parents have other plans for them. I guess we'll be parting ways soon. तो फिर जैमा कैसे नहीं पहचान रही लिनी लिनेट को? और लिनी ने नहीं बताया कि वो जानता सीजर को, वो बात अलग है, बट जैमा को तो पहचानना चाहिए था. If Gemma knows them. It's only been 10 days since I first met them, but I think that I've gotten a feel for their personalities now. They're very tough, but also very cautious, and they trust no one but each other. This, I fear, is not a good habit to have. They hide things from me too. For example, when I asked them where they live and why they wanted to learn magic, they lied. That's the thing about children. Whenever they're trying to cover something up, it always shows somehow. I can sense that their lives have been hard, possibly even dangerous too. They're not like other children. It's a shame that I can't do more to help them. After thinking things over, I decided to tell them a bit about how I see the world. It's full of lies and falsehoods.
And that is why we must find our own truth. P.S. I hope they won't find my nagging annoying. Children are so opinionated nowadays. Will it do them more harm than good for someone they've only known 10 days to lecture them like that? ना सही बात है ना वही तो P.S. Maybe I'm overthinking this. Children aren't interested in grand philosophies. It probably just went in one ear and out the other. I bet they've already forgotten every word I said. Oh, Caesar, Caesar. Just mind your own business next time. Two magic geniuses with a father and a mission, huh? Sounds a lot like he was writing about Lyney and Lynette, don't you think? So did they meet Caesar when they were kids? Let's go ask Lyney. नॉट ओनली मैट उन्होंने उसी से सीखा अब तो मैं पूछना पड़ेगा आई एम इन अ हरी Take it easy. Lyney? Shh, hold that thought. As I expected, there's a lot of fishy things going on in this place. Fishy? Uh-oh, what have you found? All in good time. Before we go over our new leads, I want to tell you how a high-altitude escape is performed. First, the magician slots themselves into a magic box in full view of the audience. The box is then suspended high in the air, and a short while later, the base automatically opens. At this point, a dummy will fall out of the box, but it looks real enough to grab the audience's attention, and they start wailing and screaming. Meanwhile, the real magician, who has by now blended into the crowd, waits for a good moment to make their appearance and put on a hysterical performance. Oh no! Is that me? Did I just fall to my death? Very vivid description. Paimon can really picture it. And then what? The audience's gaze then turns to the magician, and by the time they realize what's happened, the dummy has vanished, as if everything that just happened was some sort of shared illusion. Of course, that's just how I think the process should work, theoretically speaking. The inventor of this trick never performed it successfully. When the box opened, Caesar was the one who fell out, and not the dummy. He fell right to the ground from the highest point of the opera house. No one could hope to survive that fall. Not without a vision, at least. And no one else has ever attempted this trick since. My understanding of how it works is just based on what I could gather from his notes and the relevant gadgets here in his workshop. एक आप ही को देखा डायलॉग पढ़ते हुए क्योंकि मुझे इंटरेस्ट है ना गेंशिन की स्टोरी के अंदर आई एम इंटरेस्टेड इन द स्टोरी So Caesar's famous high-altitude escape has never been done, huh? Paimon was about to say how cool it would have been to see it in person, but if it's that dangerous, it's probably for the best that no one else tries to do it. मे भी शायद लेनी परफॉर्म करेगा इसे Wait a second. So if a dummy's supposed to drop out of the box, then where does the real magician go? How does he get out? Glad you asked. That brings us to the secret of said box. This box right here is the one that Caesar constructed himself to use in the performance, and it's not as simple as it looks. Inside, there's a device that only the magician himself would know about. 10% मेन स्टोरी 90% स्लाइस ऑफ लाइफ क्या गेंशिन की स्टोरी की बात कर रहे हो पॉन्टेन का क्वेस्ट थ्रिलर है इसलिए मजा आ रहा है स्टोरी में हाँ मैं तो ना बॉलीवुड मसाला टाइप की स्टोरी है पॉन्टेन की क्वेस्ट हम तो स्किप करके वाईटी पे समरी सुन कर लेते हैं Once the magician's inside and the box is lifted up into the air, the audience's view of the box is fixed at a certain angle. From where they're standing, they have a clear view of the front, sides, and bottom, but the back and the top are now no longer visible. At this point, the magician presses a button inside the box, opening a secret door out of view. He then escapes through this trap door onto the opera house roof, waits for the dummy to fall and distract the audience, and quietly returns to ground level. That's way simpler than Paimon imagined. Even Paimon could probably do it. पाइमन गिरेगी कैसे पाइमन तो हवा में उड़ती है Well, there's a little more to it than that, of course. The hardest part of this trick is controlling the audience's mood and reactions. That takes an exceptional degree of showmanship.
There's the falling dummy, the miraculous reappearance, the pompous performing. Maybe the magician would even have themselves tied up before it begins to strengthen the impression that there's no escape. Many days and nights of careful research and painstaking practice would have gone into this, all culminating in a performance just a few minutes long, but one that still manages to transform the shock and grief of a tragic accident to the joy and laughter of a mesmerizing magic trick. Caesar was a highly accomplished magician. But unfortunately, even he didn't manage to pull it off. So, how did it go so wrong? You said you found some fishy stuff here. Have you figured out what really happened? I can make a pretty good guess. I looked into the case files. The magic box Caesar was using at the time of his death had the secret button I mentioned positioned on the right-hand side. And, sure enough, he always used his right hand as his dominant hand in public. Okay. Nothing suspicious there. But here's the strange thing. Most of the devices in this workshop have the mechanism on the left-hand side, including this box right here, which leads me to believe that Caesar was in fact left-handed. Because a magician can't afford to have their most basic habits stand out too much. People naturally focus their attention on the most important details of the task or situation at hand. एक चीज अच्छी नहीं लगी कि ट्रैवलर लिनी और लिनेट से नाराज हो गया because they related to the फटुई. Not because they related to the फटुई, but because इन्होंने बताया नहीं. और अभी भी लिनी जो है उसने बताया नहीं कि वो सीजर से मैजिक सीखा था, सीजर को जानता था. ये भी इसने अब तक नहीं बताया इसको. और दूसरी चीज, जैमा ने इन दोनों को कैसे नहीं पहचाना वो मुझे समझ में नहीं आया. But a magician needs to be able to redirect an audience's attention at will so as to avoid arousing their suspicion. The essence of magic is getting people to believe a lie. If even the truth raises eyebrows, the falsehoods become all the more difficult to mask. And so, Caesar trained himself to use his right hand to align with his audience's expectations. Great magic always requires sacrifices. Planet of the Apes वाला, हाँ वही वाला सीजर. But in his most stressful and nerve-wracking moments, and when no one was watching, reflex would kick in and he'd use his left hand. That's why he set his gadgets with the mechanism on his left. Planet of the Apes वाला. Me, Caesar, play Genshin Impact. Oh. Exactly. I think that's likely what happened. Caesar would have been under a lot of time pressure during the escape. He'd have had mere seconds to open the hidden compartment, retrieve the dummy, then open the secret door and make a swift escape. But I'm sure he was confident. He would have rehearsed countless times to the point where it was second nature. He'd barely need to think about what he was doing because muscle memory would guide him through. So he opened the compartment, took out the dummy, checked everything was in order, and then went to leave. With his left hand, he reached for the button, and suddenly, his heart skipped a beat. It wasn't there. Much like when you reach for your keys but find your pocket empty, his mind needed a moment to process what was going on. Instinctively, his left hand would keep feeling around for the missing button, maybe for another second or two, until the bottom of the box gave way. With the stakes being as high as they were, just a 2-second delay cost him everything. The authorities would find nothing suspicious and conclude that his death was due to his own error. When in reality, someone switched the boxes, and they did it to murder him. But how would they be able to make the switch without being noticed? That would be difficult to pull off, no? It would have to have been someone who knew that he was left-handed, and who could move his props around without arousing suspicion. Someone who was always by his side. Lorenzo. Isn't that right, Lorenzo? आ गया. You just couldn't let sleeping dogs lie, could you? There's not a lot of people who'd go to all this trouble for some magician who died 10 years ago. I didn't want to have to do this, you know. Silencing you the hard way just creates more problems for me to deal with. But I gave you your chance. कैसे मारेगा और I तू हमें? hoped you'd do what's good for you and back off like the lady, but you disappoint me. You mean Gemma? So you are the one who's been threatening her! Yes, although however stubborn she might be, she was never much of a liability. But you people, you never even knew him, but for some reason you just wouldn't drop it.
which is why you can't leave this place alive. Al Take them Pacino, out. Al Make it quick. Pacino, smooth face Pacino और पेंटर डिनेरो ये मारेंगे मुझे. Do your worst! अरे I didn't factor this अरे in. Witness the power of Gua. Huh? ये लिनी ने कंफ्यूज कर दिया मेरे outlines को. your time for a light show. अरे बाप रे. Quietly now. These are about to get done. One with nature. अरे यार तो भाई साहब As one with wind and cloud. Fire hazard. मुंह पे पेंट कर देंगे तुम्हारे. ट्रैवलर ने ठेका ले रखा है पूरे तेवात का, बट लास्ट में कोई बताता नहीं उसकी बहन कहाँ है. सही बात है. Had enough yet, Lorenzo? Your cronies can't help you now. I think it's high time you started talking. And what I'd really like to know is, why did you murder Caesar? ये भी हो सकता है इसने ना किया हो. If I had a Mora for every time you said that man's name. Of course you idolized Caesar, everyone else did. But I was the real genius magician. Me! He was just an amateur who did cheap tricks for gullible children. I was the one who made magic into the fine art it is today. The aristocrats doffed their hats to me! So it was jealousy. Jealousy. Hatred, more like. I hated Caesar. All he cared about was his magic. He lived and breathed it. He poured everything into his street performances and his stupid tours like it was just a hobby to him, never bothering to think about Mora. What sort of fool devotes their life to the art of deception and never has a Mora to show for it? यहाँ तो क्राइम पेट्रोल चल रहा है. वही तो मैं कह रहा हूँ. हांजो भाई वेलकम. But the people loved him, didn't they? Oh, how they looked up to him. No one gave me a second look. All I ever heard was, "Oh, your master's amazing, isn't he?" Amazing. Yeah, so amazing that he was completely broke. Every other apprentice was living it up at their master's expense, but no, not me. I put in all the work, mastered all the skills, and it brought me nothing more than the life I already had. I have C6 Elan now, 1,000 euros. भाई हांजो भाई, जब मेरी क्या कहते हैं वो ऑन होगी ना मोनेटाइजेशन, तुमने अगर सारे के सारे 300 लोगों को सब्सक्रिप्शन गिफ्ट नहीं की फिर देखूंगा मैं. कंग्रेचुलेशन C6 इलान के लिए कंग्रेचुलेशंस. झूठ कोई अपनी गलती मान नहीं सकता. कौन अपनी गलती नहीं मान सकता? He forbade me from using magic to trick people out of their Mora. There was nothing he hated more than that. And with his reputation in Fontaine, it was too risky for me to go it alone. As long as he was alive, if I dabbled in my own brand of money-making magic, he would expose me and it would destroy me. I had to kill him. There would... And this was your only motive? It was reason enough. What other motive would I need? Well, I was under the impression that there might have been other factors at play. For instance, maybe you were in love with Gemma, but she was engaged to Caesar. Ooh. In love with Gemma? Don't be ridiculous. Guess I was wrong about that then. Next question. Are you the Phantom Weasel? I am. Caesar was so strict with me. He insisted that his way was the right way, that the sole purpose of magic was to bring joy to the world. अब इस 36 स्टार हो गया इलान से इजी. हाँ अरे उसका भी हो गया एस एरिना का. उसने तो C4 इलान से कर लिया. I never bought into any of that. I was more interested in the practical value of magic. Sure enough, it helped me fill my pockets with all kinds of valuable treasures. Oh, yeah! Charlotte told us that the weasel would steal whatever people valued, no matter how much it was worth.
आई होप दे डोंट रूइन मुराता, उसका कैरेक्टर आर्क अच्छा होना चाहिए सिमिलर टू जोंगली। अभी तो पूरा साल भर है, इतना That's आगे की just क्या how it सोचना। looked from the outside. What would any thief want with second-rate loot? I've only ever targeted high-value items. I stole cheap things as a way of practicing my craft. It was other people's overactive imaginations that conjured up the preposterous image they then dubbed the Phantom Weasel. So that's the story, huh? Well, I hope you're ready to tell it all over again during your trial. What choice do I have? You're a pack of wolves, and you've got me between your jaws. You've seen what's here, and my last-ditch effort to stop it getting out has failed. What else can I do? So be it. I've enjoyed power and wealth for the last 10 years, the likes of which Caesar could never give me. I wouldn't choose for things to end this way, but I regret nothing. Very well. In that case, I'll contact the guards. Traveler, Paimon, keep an eye on Lorenzo for me. I'll meet you just outside the workshop when I'm back. अब तक इससे पूछा नहीं हमने कि ये सीजर को जानता था, उसने बताया क्यों नहीं। At least I can finally stop looking over my shoulder now. हाँ क्यों नहीं, फाउंटेन की स्टोरी छोटी होने वाली सुना सुमेरु से। लेट्स सी, सुमेरु की स्टोरी का 40% तो आरनारा क्वेस्ट ही थी। चले Lyney has told me the whole story. ब्रूनो। Lorenzo, do you confess to the murder of Caesar and to framing him for the Phantom Weasel's crimes? Look who's finally developed a conscience. What kind of disciple murders आरनारा their किंग own दिशरथ, master? हाँ। I hope it was worth it, because they'll be hell to pay. फाउंटेन 4.6 तक होगा रूमर्स है, मुझे नहीं लगता 8 तक तो जाएगा कम से कम। Looks like it's all over. What should we do next, Lyney? Should we start preparing for your show? Let me think. Let's rendezvous with Lynette and Gemma first. With Lorenzo in custody, Gemma will no longer have to fear for her safety. Good point. We should go tell Gemma the good news right away. It'll give her some peace of mind for sure. Okay. अब कौन सा कैरेक्टर निकालूंगा? क्या बताऊं यार, अभी तो राइडन चाहिए मुझे, मुझे उसका वेपन भी चाहिए, अपना जो ये है ना अयातो का वेपन भी चाहिए मुझे। अभी देखते हैं कि क्या निकलेगा। Up and away. Ah. 8 तक तो फिर सुमेरु जितना ही हम हुआ कम कैसे? अगर होगा तो कम कब कैसे हुआ? वही तो मैं कह रहा हूँ, कम नहीं होगा। You were so quick. I've only just finished my third dessert. Your third? Lynette, come on, we've talked about this. Everything in moderation. You're not gonna have any room left for dinner now. It's fine. I'll shift to exercise mode and jog off the excess sugar. That's besides the point. Well, it's done now. But try to eat a more balanced diet Life in of the future. winners, hello. बड़ी देर में आए। Point taken. Did everything go okay? Of course. Lorenzo was no match for us. The guards are taking him into custody as we speak. Gosh, that's amazing. I'm sorry. I still didn't know if I could trust you, but now it seems I can. I had my suspicions about Lorenzo, but I... अच्छा मैसेज नहीं देखा, ओके कोई नहीं। It's okay. We understand. He did threaten you. Paimon would find it hard to trust strangers in your position too. लिनेट सरकासी, लिनेट का जो सेंस ऑफ ह्यूमर है ना वो थोड़ा वैसा डेडपैन नहीं होता, वैसा सा है। But you don't need to be scared anymore. Everything's gonna be okay. लोग कह रहे हैं कि लिनेट जो है और जो फ्रेमिनेट है दोनों के दोनों वो हैं, एंड्रॉइड हैं, मतलब रोबोट्स हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं है, ये सिर्फ खाली बात ऐसे कर रही है।
Sorry. My emotions are all over the place right now. I've been waiting for this day to come for so long. पर इतना तो कंफर्म है कि ये लिनी की बायोलॉजिकल ट्विन नहीं हो सकती, ऑब्वियसली वो बिल्ली है भाई. I always wanted to report Lorenzo. He took all of Caesar's property, which I found suspicious. But I had people watching me all the time, so I couldn't risk looking into it. I was so afraid. I was scared he'd do something terrible to me, and then no one would be left to visit Caesar's grave. So I never had the courage to speak out. अभी तो रोबोट भी डेजर्ट कैसे खा रही है एग्जैक्टली? हाइब्रिड पता नहीं क्या है. Thank you all. Truly. Thank you so much. Thank you all for clearing Caesar's name. I never would have guessed that Lorenzo was the real Phantom Weasel. He never showed any signs that there were problems between him and Caesar in public. From the outside, it looked like they got along great. And to think that lowlife's been living life to the fullest all this time, while Caesar's name was getting dragged through the mud. It's a travesty. At least his soul can finally rest in peace now, thanks to your efforts. If only I'd realized before it was too late. खत्म, हाँ ऑलमोस्ट खत्म हो गई. Don't blame yourself, Gemma. This isn't your fault. Yeah, you still have the rest of your life to live. Caesar wouldn't want to see you spending it feeling guilty. Cheer up, Gemma. My brother's doing a magic show at the Opera House tomorrow evening. Would you like to come जी along? राशु, इतने दिनों might के raise बाद your तुम्हें देखा है spirits. मैंने स्ट्रीम पे अपनी. क्या बात है? लिनेट बी माय ब्रो इन लॉ. लिनेट नहीं, लिनी. लिनी भाई, लिनी. लाइफ आधा हुआ अभी बाकी है. लाइफ आधा हुआ मतलब बहुत बड़े क्वेस्ट 10 out of 10. हाँ क्वेस्ट अच्छी है, मतलब कि इट वाज लाइक अबव एवरेज. This show will be a special one. अगेन holding it in Caesar's मर्डर honor. मिस्ट्री टाइप की. 5 दिन रह गए बैनर के इसके ना. ठीक है, अपन तो ऐसे निकाल ही नहीं रहे. In Caesar's honor. Really? खेल रहे हैं यार. Thank you. I'll be there. Great. We'll see you tomorrow evening. Traveler, Paimon, don't be late. अबे इससे पूछो तो सही इन दोनों से कि तुमने इसने बताया क्यों नहीं. We'll be there. No way are we gonna miss out on a free magic show. ये दोनों सीजर के वो थे स्टूडेंट, और इसने बताया नहीं इसको, और ये पूछ भी नहीं रहा. वाह. Wait. Paimon feels like we're forgetting something. Oh yeah, Caesar's यही तो मैं कह रहा हूँ. never found out if the two kids Caesar taught magic to were Lyney and Lynette or not. यही तो मैं बोल रहा हूँ. Lyney changed the topic back in the workshop, so we didn't get a chance to bring it up. Oh well. Guess we'll just have to ask Lyney tomorrow evening. बस अनूप सोनी की कमी थी. मुझे C1 निकालने की. अच्छा तुम्हें C1 निकालनी है, निकालो. 5 दिन है. I've spoken many choice words about Caesar over the years. I'm so ashamed of myself now. He was such a good man. Dolora. I can't believe Lorenzo was intimidating Gemma all this time. He comes around here sometimes. Not to clean Caesar's grave, though. He just stands off to the side and watches creepy. Gemma from a distance. Creepy. She must have known, but she never asked him to leave. I wonder why that is. डरती होगी ना. It may take some time, but Caesar's reputation will be restored now that the real culprit has been captured. Looks like Gemma chose a good man after all. Wait until the next evening. Okay, wait. Next evening. कितने बजे? 18. दस पुल करके आता हूँ. करो बताना निकली कि नहीं निकली. ओके. यार कुछ सिजिल्स वगैरह भी इकट्ठी हुई होंगी. फाउंटेन में डालूं क्या? अबे सारे लिए हुए वाले क्यों लग रहे हैं? अबे क्वेस्ट स्टार्ट हो गई यार.
बाद में। फॉन्टेन का एक्सपेंशन 4.1 तक ही होगा या आगे भी एक्सपेंड होगा? होगा भाई, होगा। अरे बस इतना लंबा कट सीन। 124 है मेरे पास, वाह। सुमेरु का ज्यादा बढ़िया था। इतना बढ़िया अनियन ट्री बनाया हुआ था उन्होंने, शलगम बनाई हुई थी बढ़िया सी, वो ज्यादा अच्छी थी। चलो 2 पुल कर लेते हैं, 2 आ गए अपने पास यहाँ पे। चलो लेट्स गो टू ओपेरा एपिक्लेस। ये भी अच्छा ही है क्या? गाइस किसी ने लाइक नहीं किया हो तो कर देना। फाउंटेन का फाउंटेन नहीं, क्या है ना कि जो सुमेरु का था वो एक क्वेस्ट के पीछे छुपा हुआ था। क्वेस्ट की शलगम खुल गया, ये तो ऐसे ही आ गया। ठीक है ना, इनाजुमा का भी कोई क्वेस्ट के पीछे थोड़ी छुपा था। इनाजुमा का जो वो पेड़ है सीक्रेट साकुरा, वो भी खुला ही हुआ था। अभी तो कोई नहीं था, अब सारा भर गया। ये शार्लोट बैठी है। अरे तुम असिस्टेंट हो भाई, तुम जाओ। Not this time. My brother's going solo today. ओह, सुमेरु जादुई नगरी थी, ये मॉडर्न नगरी है। So, I'll be watching with you. Good evening, ladies and gentlemen. I hope everybody's ready because the show is about to begin. The great magician Lyney has prepared a spectacular show for us all tonight, concluding with an all-new grand Lynette is so finale cute. that no Yeah, she audience is. has ever seen before. सरप्राइजिंगली क्यूट, मतलब कि हम उसको शक्ल तो हमें इसकी बहुत पहले से पता है, लेकिन या चेज वही करेगा, सीजर वाली ट्रिक करेगा। बस गेम में स्कारा, राइडन और अल्हेतम और न्यूलेट का इंटरेक्शन देखना है। अच्छा, Thank you all so much for coming. जरूर। Now, prepare to join me on a journey through the mystical and miraculous. कटसीन कटसीन। Exciting stuff, isn't it? Yes, it's just... It reminds me of him. No wonder. Caesar was a famous magician too. So, how did you two first meet, Gemma? Well, I was out on the street once, and I saw him performing for little children. Feels bad for Caesar. हाँ, क्या कर सकते हैं, पर इंसाफ मिल गया उसको। हाँ, ये देख के अमिताभ बच्चन की जादूगर। Children love magic because they're willing to believe in things that can't be rationally explained. Caesar had this amazing way of bringing them into a dreamlike world, and somehow I felt drawn to him too. So I went up and asked him to do a trick for me. Aw, that sounds so romantic. What trick did he do? It was with a flower. He took it in his hand, snapped his fingers, and it magically appeared on my head. ये ट्रिक तो लिनी ने की इनके साथ। I was so happy that day. No one had ever given me a flower before that. Oh, that's so cute. Actually, now that you mention it, Lyney's done that one before. Is that right? Then I suppose he's a romantic at heart, just like Caesar. So let's treasure the time we have with him. अभी भी जेमा पहचान नहीं पा रही है, बता ही रही है कि लिनी लिनेट को जानती है। After all, you never know when the people dearest to you might be gone. That's right.
It's all over now. Paimon doesn't really know how to comfort you, but at the very least, no one's gonna be intimidating you from now on. You can breathe easy at last, right? At least लिखा है, at last लिखना था. Right. Yes, you can breathe easy now, Phantom Weasel. हाँ? See? Even Lynette says... Wait, what? हाँ? The Phantom Weasel? Lorenzo escaped? Where is he? Don't tell me. भाई साहब, अगर ये हुआ तो ये उसे कहते हैं ट्विस्ट एंड टर्न. भाई, ट्विस्ट. What do you mean, Phantom Weasel? कि लोरेंजो इसे प्रोटेक्ट तो नहीं कर रहा था क्योंकि इसके प्यार में था वो, और ये मास्टरमाइंड थी. शी वाज द मास्टरमाइंड ऑल अलोंग. As Lyney once said, a performer's job is to commit fully to their role and put on a flawless performance for their audience. But once the bag of tricks is empty and the curtain falls, it's time to end the show. The spotlight is no place for someone with no more cards up their sleeve. It's been 10 years, Gemma. Aren't you tired of the grieving widow act? I think it's time to put an end to it. अभी मैं कहूँ जेमा बता क्यों नहीं रही है कि ये इन दोनों को जानती है? What are you talking about? Paimon doesn't like this riddle. Traveler, Paimon doesn't like where this is going. Come on, say something! Ladies and gentlemen, I hope you're all enjoying the performance so far. There will now be a brief intermission, after which Lyney will perform the most electrifying act of tonight's show, the one we've all been waiting for. The final performance will take place outside of the Opera House, so please make your way outside in a calm and orderly fashion. Okay. Wow. The Phantom Weasel never did like public places, did they? Don't worry, this place will be quiet soon. Let's talk somewhere else for now. Bro, मुझे लग रहा था कि स्टोरी बड़ी कॉमन सी चल रही है, लेकिन feels really bad for Caesar. बीवी ने मार दिया. अगर आराम से बैठा जाए. स्टोरी तो बड़ी इंटरेस्टिंग हो गई अचानक से. अभी मुंह बना के बैठी हुई है ये. ओह, लिनी गुस्से में है. लिनेट गुस्से में. And unfortunately, I'm all out of gadgets, so I'm afraid I can't do any tricks to liven up the mood. शुभम, वेलकम. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. कैसे हो? This is a big mistake for a magician to make, but thankfully I do have a backup plan. Now, who wants to hear a story? Lyney? Don't we have more important things to address right now? Lynette accused Gemma of being the real Phantom Weasel a moment ago. Oh, what the heck's going on? लिनेट को 5 स्टार होना चाहिए था. All in good time. Magicians are good at guessing what people are thinking. I know the questions you want to ask. And as it happens, the story I'm about to tell might answer a few of them. Come on, give us a cutscene. एक cutscene हो जाए. Really? ताजा ताजा, गरम गरम. Let's hear it. Paimon's dying of curiosity here. एक मिनट, गाइस, मेरा ना बालूशाही खाने का मन कर रहा है. कल बालूशाही आई थी घर पे बहुत बढ़िया सी. मैं 1 मिनट में लेकर आया. फिर आगे बढ़ाते हैं. ये रही मेरी बालूशाही की कटोरी. मैं गया और अभी लेकर आया. I'm back. ये रही मेरी बालूशाही. क्योंकि इतनी अच्छी स्टोरी चल रही हो, कुछ खाने के लिए होना चाहिए ना साथ में. एक कटसीन के ऑर्डर लग गए आर्कन भाई के. क्योंकि भाई कुछ जैसे पॉपकॉर्न वगैरह खाया जाता है तो कुछ होना चाहिए खाने के लिए बढ़िया सा.
चलो आगे बढ़ाते हैं. Let's go back to the very beginning. A decade ago, when the Phantom Weasel was terrorizing the court of Fontaine, she never missed a target, never left a trace, and no treasure was safe from her thieving hands. But as her infamy grew, so did the readiness of the police, and her opportunities to act became ever fewer. Every day, she ran the risk of being exposed for who she was. Ultra. Of course, she could not simply take this lying down, and before long, she found her ticket to freedom. She would create a scapegoat, a false weasel to close the chapter on her behalf. After weighing her options, she set her sights on a renowned magician, Caesar. After all, magic and theft shared enough similarities for people to buy the story when the truth came out. अभी तक चल रही क्वेस्ट और क्या? वैसे जिंगलियो बैनर के साथ टिंगियन किंगचू और सांपो आ रहा है अकॉर्डिंग टू लीक्स. जिंगलियो अच्छी है. So then what? Being the master deceiver she was, the weasel easily earned Caesar's trust. Now all that remained was to frame him for her countless crimes. But as she was considering how to make her move, she noticed Caesar's aggrieved pupil, and a new thought entered her mind. Maybe I don't need to get my hands dirty after all. At her encouragement, Lorenzo tampered with Caesar's magic box, causing him to fall to his death. लगता है आज पुल नहीं होगा. मैंने तुम्हें बोला था कि मैं आज पुल कर दूंगा, तुम गायब ही हो गए. अब आ रहे हो. Afterwards, Lorenzo seized his master's property, and the weasel set about tarnishing Caesar's reputation. Two co-conspirators committed the perfect crime. I've got to hand it to you. You're both exceptional storytellers. It's enough to make even me wonder whether there was really another mastermind behind all this, pulling the strings. But I just have one question. You seem to think that I am the villain in this tale. What's brought this on, Lyney? Is it something that Lorenzo said? Don't worry, Lorenzo said nothing at all. But I never believed that he was the weasel, and in fact, my investigation only made me more certain of that. He was too forthcoming with his confession, as if there was something else he was trying to hide. ये थोड़े बाहर गए थे. ओके. ये स्टोरी ओवर होती है, मैं पुल कर दूंगा. अपना आईडी पासवर्ड तो भेज दो भाई. डीएम कर दो. इलान पुल करता हूं तुम्हारे अकाउंट पे. ये स्टोरी ओवर होती. How disappointing. So you'd sooner trust Lorenzo than me? Even without a shred of evidence? A magician is an expert at playing the audience to get the result they want. And I have no doubt that you, Gemma, are equally talented in this regard. With a little help from Lorenzo, you put on a very convincing performance. The lovesick fiancé, whose devotion to her betrothed is unshakable, even under threats of violence. Caesar was maligned and hated by all for 10 years, but you? Everyone sympathized with your plight. संदेश. संदेश क्या? कौन सा संदेश? वो मिठाई की बात कर रहे हो क्या? संदेश. नहीं वो नहीं है, बालूशाही है ये. Who would suspect for 1 second that the lovely young lady always seen weeping in front of Caesar's grave was actually the mastermind behind his demise? No, not that poor lady. Perish the thought. What's your favorite all-time game? Halo Combat Evolved. Wait, so you mean the whole intimidation thing was just a hoax? अच्छा चैट. Gemma and कुछ मिस Lorenzo हो गया were क्या? both in on it? आपका नाम तो दसो. मेरा नाम सीक्रेट है. You it's Arkhon. But why would Lorenzo agree to that? And why didn't he sell her out even at the end instead of admitting to being the weasel himself? क्योंकि वो इसके साथ प्यार में पड़ा हुआ है. Yes, why indeed? Maybe Gemma herself could enlighten us on that question. Well, Lyney, if you're so confident in your version of events, then I think the answer should be obvious. RDR2 नहीं है आपका फेवरेट ऑल टाइम गेम? मैंने खेला भी नहीं आज तक. फेवरेट कैसे होगा? Having killed Caesar with his own hands, Lorenzo was plagued by overwhelming guilt. Revealing the Phantom Weasel's true identity would serve no purpose. But if the Weasel remained free, then she could take care of Lorenzo's loved ones.
An excellent answer, though sadly a little dull. Is that right? Well, don't let me bore you. If you'd care to change the topic to something more interesting, I'd be much obliged. मैं तो टूट गया हूँ दोनों गेम से क्या ही कर सकते हैं? As a matter of fact, there's one thing I'd really like to understand. Why would the real weasel have targeted things that only have value to other people? Could you shed any light on that? Of course. After all, we're just telling stories here, aren't we? हाँ क्यों नहीं? If I had to guess, I would say that the real weasel must have had a terrible childhood. Left to fend for herself after her parents died young. Betrayed, scorned, beaten. She'd scrounge waste paper from garbage bins to draw on, using twigs and dirt for lack of ink and pen. She'd sew ugly rag dolls from whatever scrap material she could get her hands on. This was her only source of happiness in life. But it was all she needed, and she was content. Until the world decided that even this was too good for her. Once again, she was betrayed. And this time, everything was taken from her. She felt like life was a miry pit that dragged her further down the more she struggled to escape. At that tender age, she should have been happy. Instead, she stood in the shadows and watched with envy as all good things in the world passed her by. This was a fate too cruel for anyone to bear. Her pain became a breeding ground for dark thoughts. Thoughts which festered and grew into a twisted solution to her troubles. कंटेंट ट्रेलर से अच्छा ओवरचर टीजर लगा मुझे। वो तो एक्सीलेंट था। वो बड़ा अनएक्सपेक्टेड था। वो अचानक से इन्होंने ड्रॉप कर दिया होयो वाला ना, किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। I detest the happiness of others. Yes. In all its forms alike. सीजर का इस्तेमाल करके फेंक दिया गया। I will rob them of everything they hold to be good and true. And it will fill the void in my soul. Ooh. That's some pretty heavy stuff. Now it all makes sense. Does this story satisfy you, Lyney? Yes, it is quite to my tastes. Thank you for helping to clear up my confusion. Huh. That's right. What drove you to write that letter, Gemma? What were you trying to achieve there? Because without that, none of this would have ever come to light. She didn't write the letter. It was me. After 10 long years, I'd hoped that the Phantom Weasel would be consigned to the history books by now. But it seems like someone still wasn't ready to let her finally be at peace. Lyney. Or should I call you the Phantom Copycat now? You were the one who posted that letter outside the Opera House. Yep. Very sharp, Phantom Weasel. Still as shrewd as ever. Well, no need for me to be coy about it. Our goal was to clear Caesar's name. The most straightforward way to change the public's impression of Caesar was to force the Weasel to show themselves. That's it? You had no इसको other रोना क्यों agenda? आया? सीजर के जाने का गम हुआ या अपने कर्म कांड का? एक्टिंग कर रही है भाई। It is acting. Of course we did. We made it quite clear in the letter, I believe. I shall take from you that which you hold most dear, just as you did to me 10 years ago. 10 years ago? You mean Caesar's death? You met him? ये अब तक नहीं पहचान पा रही। ये वही दोनों बच्चे हैं जिनको सीजर ने सिखाया। Wait. Ah. Oh, I get it. You were those two obnoxious kids. वाह। It's been so long, and you're all grown up now. I didn't recognize you. यही तो मैं सोचूं कि ये बताया क्यों नहीं इसने? He taught you magic back then, didn't he? For what, 10 days or something? And you went to all this trouble. Why? Because you feel like you still owe him something? अजिंक्य भाई का दिल पिघला जा रहा है इसको देख के। देख लो भाई, अब तो क्या कहते हैं, विडो है, विधवा है, कर लो शादी। We remember all our debts, however great or small. 10 years ago,
Caesar's reputation was torn to shreds, and his legacy was thrown out. 10 years on, and no one cares what the truth is anymore. But we did not forget, and so we came to find you. And? What exactly did you take from me? I'm still standing, as you can see. Lorenzo has admitted to everything. Lyney एकदम बंटी बबली. Free? Do you really think so? Caesar once told me that even though the world is filled with lies and falsehoods, we must find our own truth. I think that applies to you too. Truth can take many forms. Prized possessions with nostalgic value, fervent hopes and dreams, and irreplaceable people. Life took many things from you, and those wounds never healed. When they ached unbearably in the dead of night, stealing became your way of numbing the pain. मुझे तो गुस्सा आता है ऐसे लोगों पे. किसकी बात कर रहे हो? इसकी ये बीवी की? अरे अब तक चल रहा है, बस खत्म होने वाली है. What are you trying to say? I'm saying that for the last 10 years, you've been living a rather uneventful life. Perhaps that's because you found something other than a life of crime to fill the hole? Back to Lorenzo for a second. He murdered his own master, played along with your act, and took pains to make sure any suspicion would be directed towards him. But what did he have to gain from all that? Yes, what? He knew who you were and the things you'd done, and despite that, he was willing to give everything up for your sake. He's the reason that you haven't felt the compulsion to steal in all these years. You're more than just accomplices in murder. You're the only real friends each other has. So I think you know, deep down, that he is the only truth you have in your life. पीठ पीछे मारने वाले. भाई डिस्कॉर्ड डीएम किया है 10 पुल में क्या मिला? अच्छा मैंने देख लिया, पर मैंने अभी क्योंकि मैं स्टोरी कर रहा हूँ ना रिप्लाई नहीं किया मैंने. But that truth is gone now. वो तो कुछ भी नहीं है, मतलब it's like very You'll never see it again. useless great sword है वो तो. Congratulations on your freedom, Gemma. Your freedom will cost you dearly. From now on, you'll be all alone in a world full of lies and falsehoods. I do hope you'll be able to bear it. You've still got a long life ahead of you after all. Gather round, one and all. The time has now come for the amazing Lyney to perform his final act in tonight's show. Robert Houdin. Robert Houdini का नाम है. Rest in peace, Caesar. I'm sure you're all wondering. तुम सबको बड़ी क्या कहते हैं सीजर से वो हो रही है. Well, wonder no more, for the answer is a death-defying high-altitude escape. सबने मिलके गद्दारी करते उस साथ. उसके असिस्टेंट और उसकी बीवी दोनों ने मिलके. ये तो वाकई में क्राइम पेट्रोल का सीन हो गया, एपिसोड हो गया. लिनेट की वाइब्स मीको जैसी है. नहीं ना, मीको थोड़ी कॉय है. मीको को पता रहता है कि हाँ शी इज बीइंग कॉय, शी इज बीइंग स्मार्ट. लिनेट इज जस्ट sarcastic. A high-altitude escape? I'm sure you all remember the magician Caesar. This was the very trick that led to his fatal fall, after which he was dubbed the Phantom Weasel. So we have now learned that Caesar was wrongly accused, and that the real Weasel has now confessed to तुम्हारा their 3 है. crime. ओहो, इस लाइफ में लड़कियों पे कभी भरोसा मत करो. Guess that's my cue to leave. Whew. I've been practicing this one for ages now, but I'm still a little nervous. Traveler, Paimon, I hope you enjoy the rest of the show. There may be a lot of people watching tonight, but you alone are my true witnesses. यार ये हमें विटनेसेस बहुत बुला रहे हैं. जोंगली ने भी हमें विटनेस बोला था, अब ये भी हमें विटनेस बोल रहा है. Lyney, wait. You two hid a lot from Caesar. He went to his grave without ever knowing your secrets. So what about now? Are you an open book? Or are you still the same as ever? You don't have to tell lies to end up isolated and alone. One day, you'll end up exactly where I am today. Maybe then you'll finally understand. You're wrong. I'm nothing like you. So, what are we, doing now?
मैजिक शो देखो When you're ready, let's head outside and watch the show. वही और क्या What about Gemma? She'll figure out what's best for her soon enough. Oh, and if you'd like to see Lyney after the show, you know where he'll be. The usual haunt. All right. Well, let's go and watch Lenny's finale then. This trick's a pretty dangerous one, but he should be able to pull it off, right? जेमा से बात करते हैं What is my truth? Sometimes I think I'm like a gambling addict. By the time... Magicians are not like thieves. Thieves पाइमोन only की tear वॉइस things बिगनिंग में apart, ही सही थी but good-hearted magicians, ये तो they स्टार्टिंग वाली put ना things back together. एम्बिबिटर का डैमेज तो है 665 टैलेंट बेसिक अटैक 670 लेवल 80 लेवल क्लारा वेपन नो बफ 69 147 क्रिट 50 75 क्रिट डैमेज हाँ तो भैया ही इज द हाईएस्ट डैमेज डीलर राइट नाउ ओके कहाँ जाना है ओ बाहर जाना है चलो भाई कट सीन दे दो एक अरे वाह बिल्कुल ही झाड़ पे चढ़ गया है तो ओके कट सीन टाइम Magic should be mysterious, surprising, and defy logic. Magic is hard work. Every single movement has to be practiced thousands of times. It's alright. We're used to that. विदाउट हैट वाली लिनेट We're sorry. You've taught us so much, but we can't tell you the whole truth. It's okay. Do you still remember what I told you? This world is full of lies and falsehoods. नाउ यू सी मी I हाँ only फिल्म hope देखी that मैंने one बोली अच्छी day है you can find your own truth. What about you? Have you found your truth? Magic is my truth. I want to perform a magic trick so great that people will always think of me when they talk about it. For a magician, what greater honor could there be? Look! Behold! Lyney is sealed inside the box. Will he manage to escape? 10 years ago, Caesar attempted this very trick, and it was at this precise moment that... Oh? Watch out! ये तो वाकई में गिर रहा है यार Mysterious. Surprising. हिडन And लीफ logic वेलकम defying. हेलो Isn't that right? This honor belongs to you, Caesar. I'm just sorry it's a little late. हैं क्या हुआ Did you see that? One minute he was falling. Oh, and अच्छा the next, he turned into flowers. How could he possibly have done that? How mysterious. I didn't blink once. He just vanished right in front of my eyes. What a heart-stopping magic show! This was really worth the trip. Caesar's name has finally been cleared, and Fontaine's new star magician Lyney has fulfilled a wish on his behalf. Oh, I couldn't ask for a better grand finale. It will make a great headline for the Steambird tomorrow, even if I do say so myself. लिटिल लिनी की वॉइस बेनेट जैसी नहीं लगी इतना ध्यान नहीं दिया यार मैंने Looks like everyone really loved Lenny's grand finale. लेकिन लिनी है कहाँ Paimon doesn't see Lenny anywhere. Where'd he go? वही Oh, Lynette said he'd be waiting for us at the usual haunt. But, where is that? Oh, you mean the one where Caesar's buried? Yeah, that's probably it. This whole magic
magic show kinda seemed like Lyney's way of saying goodbye to Caesar. So it makes sense that that's where he'd be afterward. अब क्या करूं मैं, आप ही बताओ. मतलब Alright, let's go look for him there. लेनी का स्टोरी क्वेस्ट, हाँ वही बस खत्म होने वाला है, हो ही गया ऑलमोस्ट. इसके बाद ट्रेल ब्लेज क्वेस्ट होगा क्या यार? ऑलरेडी ना काफी देर हो गई स्ट्रीम होते हुए, तो मेरे ख्याल से अभी तो नहीं होगा, अब कल ही करूंगा ट्रेल ब्लेजर क्वेस्ट में. इतनी अच्छी कैरेक्टर में डिफॉल्ट ग्लाइडर अभी पूरी बिल्ड नहीं है ना, अभी लेवल 60 पे है, 90 होगी तब लगाऊंगा. और इम्बिबिटर लूने का एलसी किसको दूं, लिनी का वेपन किसको दूं? रखो उसको, क्या कह सकते हैं. Are you alright? Paimon was scared to death when the chain broke. Paimon was sure something had gone horribly wrong. तुम निकालते गलत हो ना. तुमने एलसी लाइट कौन वाले पे तुमने पुली क्यों किया? तुम्हारे पास कैरेक्टर नहीं था, तो ये तो पॉसिबिलिटी तुम्हारे दिमाग में होनी चाहिए ना कि कुछ और भी निकल सकता है. Magic is a performance art. A magician has to get creative to keep the audience on tenterhooks. That's our job. So I tweaked Caesar's original setup a little to keep it fresh. और गेंशिन का तो मैं समझ भी सकता हूँ कि तुम सोच रहे हो कि दूसरा मिल जाएगा, तुम्हें गलती से लिनी का वेपन मिल गया, पर एचएसआर में क्या क्यों पुल किया तुमने लिनी का इसका इम्बिबिटर का वेपन? तो बस एचएसआर के डेलीज करिएगा क्या? नहीं वो भी नहीं करूंगा, ऑन स्ट्रीम नहीं करूंगा, मैं बाद में कर लूंगा. I was honestly a little nervous during the इसके बाद अगर अल्ट्रा यहाँ पर है तो अल्ट्रा की येलान पुल करनी थी. Suddenly feeling weightless, seeing the sky and the ground spinning and spinning. तो अगर वो यहाँ पर है तो उसकी येलान, उसके अकाउंट में लॉगिन करके येलान के पुल्स करूंगा. अगर नहीं हुआ तो सिंगल पुल में. अब भाई ये तो पॉसिबिलिटी तुम्हें दिमाग में सोचनी चाहिए ना, मैं क्या कह सकता हूँ. Sometimes I can't help but wonder what Caesar thought in those final moments. मैं इसीलिए जब मेरा कैरेक्टर निकल जाता है ना, मैं उसका पिटी बिल्ड करने के लिए कभी भी पुल नहीं करता, पिटी बिल्ड करने, क्योंकि मुझे पता है कि देयर इज अ वेरी सॉलिड चांस कि मेरी 50-50 रूइन हो सकती है और मेरी पूरी की पूरी पिटी रूइन हो जाएगी. पुल्स लेट्स को, लेकिन अल्ट्रा का होना जरूरी है ना, मुझे तो नजर आ नहीं रहा. Did he regret taking Gemma and Lorenzo on? Or did he believe that it was his own slip up right until the end? You know, Paimon's been wanting to ask you about something ever since we were in Caesar's workshop. You learned magic from Caesar once, didn't you? When was that? मेरा कुछ बचा है क्या रोल करने का या स्ट्रॉन्ग बॉक्स में? अभी तो बहुत कुछ बचा है. After I joined the House of the Hearth. To be honest, Lynette and I had an agenda when we approached him. I told you about my past before, remember? As a young boy, I survived by secretly learning magic from street performers. I'd watch their tricks and try to figure out how they were done. But I quickly realized that observation alone could only get me so far. What I saw was the polished final performance, but the rigorous training they put in behind the scenes remained invisible to me. मेरा कर दोगे क्या अभी प्लीज? स्ट्रीम पे नहीं यार, स्ट्रीम पे लोग देखने बोर हो जाते हैं. मैं तुम्हारा स्ट्रॉन्ग बॉक्स जो है ना आराम से, जैसे मैं कर रहा हूँ 2 दिन से, वैसे करूंगा. I needed to स्ट्रीम पे learn बैठ के how मैं to स्ट्रॉन्ग improve बॉक्स my पुल sleight of करूँ. hand, hone my misdirection skills, and make niftier props. We were gifted enough that we'd made some progress by ourselves, but without proper guidance from a professional magician, we quickly plateaued. लाइव कर दो ना, लाइव ही करो यार, देखो दूसरे लोगों को भी मजा आना चाहिए ना, वो भी कुछ देखने आए हैं यहाँ पे. So that's why you sought Caesar out? पीसी पे पुल करना ठीक है, बट मोबाइल पे छोटी स्क्रीन पे ओलेड डिस्प्ले पे स्प्लैश आर्ट देख के ना मज़ा अलग ही है. नहीं यहाँ पे भाई 27 इंच की 24 इंच की स्क्रीन पे ही मज़ा आता है, ऐसी बात नहीं है. शाम को स्ट्रीम करिएगा क्या? डोंट नो भाई, कुछ नहीं कह सकता. We figured there was no harm in asking, but it took us by surprise that he was so willing to teach us. In all, we only spent 10 short days together, but he was very good to us. By contrast, we hid so many things from him. बॉस के भी स्प्लैश आर्ट आ गए हैं, आपने देखा क्या? कौन सा बॉस? For instance, when he asked why I wanted to learn magic, I answered, it's my passion. But in truth, there was already a lot more to the story by then.
After being taken in by an aristocrat for our magic talent, then betrayed soon after, this was no longer about me doing what I loved. अभी तक ये क्वेस्ट चालू है। हाँ अब खत्म होगी खत्म, बस थोड़ी सी रह गई। वीकली बॉस का स्प्लैश आर्ट कब से आने लगा भाई? कौन से वाले का? पर अब तो खाना वाना खाने जाइएगा ना। हाँ वही तो, अब तो यार भूख लगी, दोपहर का टाइम हो जाता है, लंच का टाइम हो जाता है। How the lie escaped my lips even as I was hesitating over whether to tell him the truth. इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि स्ट्रीम जल्दी स्टार्ट हो, बट डेली 11:30-12 बज रहे हैं। अगर स्ट्रीम जल्दी स्टार्ट हो जाए ना, 10 बजे स्टार्ट हो जाए, तो आराम से मैं 2 बजे तक कर सकता हूँ। 4-5 घंटे की स्ट्रीम हो जाती है। Trust is a beautiful thing. Sadly, I'd forgotten how to trust by then. Lyney. Still worried about the way I feel? You really are a gentle soul, aren't you? But don't worry, I'm used to it now. From the mansions of the elite to the house of the hearth, lies and selfishness have followed me and Lynette everywhere we go. Go to archive enemies, then roll all the way down. अच्छा. After Caesar went on tour, we became busy with our missions. The next we heard of him was that he'd fallen to his death, and was now declared to be the Phantom Weasel. That night, I remembered his smile. But as I lay there, I didn't know what to say to him. To keep secrets is to put up walls. The longer you keep them up, the less you let people in. Then, one day, you look around and realize your life is like an empty auditorium after a show, full of seats once occupied by all the people who left. But I guess that's the price we have to pay. You only realize how much someone really meant to you. अरे जब भी कोई कैरेक्टर हम पुल करते हैं तो उसकी एक आर्ट नहीं आती स्क्रीन के ऊपर, उसे कहते हैं स्प्लैश आर्ट। would hurt Gemma because I felt it for myself. Yeah, cheer up, Lyney. We've had to say our fair share of goodbyes during our journey too. But whatever happens, Paimon always believes in what tomorrow brings. गाइस किसने अब तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना स्ट्रीम को। Fun toys, and the traveler by my side. Paimon just needs to focus on things like this, and all the unhappy stuff goes right out the window. You know, traveler, doesn't that kind of make you Paimon's truth? Exactly. It's the same for me and Lynette. We are the truest thing each other has in the world, and nothing can replace that. अब ये कह रहा हूँ वीकली बॉस में कैसे सकते हैं? उनकी हो सकता है, लोगों भी चेक करता हूँ। Life has taken plenty from us, like it did from Gemma, but at least it left us with each other. That's what gave us the strength to get through the darkest days. That's why the darkness never consumed me, and why it never will. Maybe we live in the shadows too, but we remember every precious ray of light that shines through. All right, time to lighten this conversation up a little. What did you think of the show tonight? Were you happy with it? अभी तो 35 पेटी हो गई बेबिटर लूने के लिए। भाई अब और पुल मत करना, वरना तुम अपनी पेटी बिगाड़ लोगे। It was amazing. Paimon just wishes we hadn't been so distracted with the Gemma situation. We spent most of our time in the opera house just talking and pretty much missed the entire first half of the show. Lyney, could you do just one more trick for us? Whoa, that's a bit of a tall order, I'm afraid. The show's just finished, so my sleeves are decidedly card-free right now. Aw, come on! Surely you can think of something. The Lyney Paimon knows can do anything if he puts his mind to it. Oh, all right then. I'll give it a go, but only because it's you. Okay. Watch closely. I have a flower in my hand. You liar! There's nothing in your hand. We ain't going along with this. Huh? My goodness, you're right. But I could have sworn I brought one here with me. Okay, try this. Count down with me. भाई अपनी आईडी पासवर्ड भेजोगे? 2, 1. 3, 2, 1. Now, have another look around. Maybe the flowers appeared somewhere else. Really? Let's see. Wow, there it is! Oh, this is a different flower from the last time, right? This one's called, oh yeah, a rainbow rose. But more importantly, Paimon has to know how to trick his dad. Okay. Please, Lyney, pretty please! Well, if you want to learn magic, you'll have to start by addressing me as teacher. Fine. Please, teacher, please! अब तो खींच रहे हैं यार एक क्वेस्ट को। Since you asked so nicely,
I'll share one little tip with you. Namely, the student of magic cannot solely rely on others being prepared to reveal their secrets. You have to observe, think, and find the answers for yourself. Is that it? लिनी के वेपन और कौन सा कैरेक्टर यूज कर सकते हैं? गानी यूज कर सकती है। Ah, look at the time. We shouldn't linger here too long. Thanks again for coming to see my show. I bid you both good night. I look forward to seeing you again. हाँ, गानी यूज कर सकती है। All right, fine. See ya. Shall we head back now too? Oh, Paimon can't wait to read the Steambird tomorrow. Paimon bets Lyney and Caesar will be plastered all over it. Let's head to the Steambird's offices tomorrow morning and जा see रहे what हो? we can find out. अल्ट्रा आ गया, उसकी एलान पुल करनी है। बेचारे की C4 एलान हो चुकी है, उसको 2 कॉन्स्टलेशन और चाहिए एलान के C6 करने के लिए। तो ही पुल करूंगा। और इम्बिबिटर का LC किसी को दे दो, डिस्ट्रक्शन वाले। अबे क्या ये वेट ही कराया जा रहा है? वेट टिल नेक्स्ट डे। और कितनी रह गई है भाई? खत्म करो क्वेस्ट को यार। ओह गॉड, अब मुझे क्या कहते हैं वो फिनिश करना पड़ेगा। छोड़ो, अभी मुझे एक क्वेस्ट फिनिश करनी पड़ेगी इस क्वेस्ट को फिनिश करने के लिए। सो लेट्स लीव इट एट दैट। मैं लॉग आउट कर रहा हूँ और अल्ट्रा का अकाउंट लॉग इन करके अब करेंगे येलान के लिए पुल। अल्ट्रा कोड जाएगा भाई। टेल मी द कोड। अगन भैया क्लारा का एलसी देखे थे क्या लूने के लिए? हाँ देखा था। ठीक है, सही है, काम कर जाएगा। लेकिन उसका जो खुद का सिग्नेचर है ना, और जो द फॉल ऑफ एन एऑन है, सबसे बेस्ट तो वही है। अल्ट्रा भाई कोड भेजो। स्प्लैश आर्ट देख लो पहले, यहाँ देख लूंगा लॉगिन करके। अभी इस अकाउंट में लॉगिन करके देख लूंगा। तो हर्टा स्टोर वाला वर्सेस क्लारा एलसी। हर्टा स्टोर वाला। अरे अल्ट्रा कहाँ गया? मैंने सुना अल्ट्रा के लिए विश कर रहे हो। हाँ, उसकी एलान 2 कॉन्स्टलेशन निकालने येलान के। अब भाई मेरे को कोड देगा तो मैं लॉगिन करूँ, गाया भी हो जाता है। अब आया 755055। ओके, लेट्स गो। अल्ट्रा के लिए वेलिंग। यो मैं भी आ गया देखने। ओके, पहले ज़रा वो एनिमीज़ का वो देखूं ज़रा। बॉस स्प्लैश आर्ट करे, नहीं आई है। कौन सा बॉस है ये? कौन सी आर्ट है भाई? कहाँ है स्प्लैश आर्ट? कहाँ है बॉस? एनिमीज़ में होगा। कहाँ देखूं इसकी स्प्लैश आर्ट? एनीवेज चलो पुल करते हैं। ऐलान लेके ही पुल करेंगे, ठीक है? किस में पुल करूं भाई? 740 प्रीमोस तुम्हारे पास हैं और तुम कह रहे पुल करो। अरे आर्काइव में, आर्काइव के अंदर। ये क्या मजाक है? भाइयों इसे कहते हैं वेलिंग, समझ रहे हो? इसे कहते हैं वेलिंग। भाई साहब 8000 जेनेसिस क्रिस्टल ऐसे ही डाल दिए, ऐसे ही डाल दिए। जैसे कि स्ट्रीट साइड में जो वो नहीं खड़े होते, क्या कहते हैं, खाना बनाने वाले, वो भर भर के मक्खन डाल देते हैं, ऐसे ही मक्खन डाल देते हैं ना, ऐसे ही भाई ने जेनेसिस में क्रिस्टल डाल दिए। एनीवेज
फिश स्टार्ट करते हैं। 10 पुल्स, लेट्स गो। भाई ये क्या है? ये हमारा अल्ट्रा भाई वेल है। अल्ट्रा मुझे लगता है अल्ट्रा ने किसी अमीर बूढ़ी औरत से शादी कर ली है और वो बूढ़ी औरत मर गई है अपनी सारी जायदाद अल्ट्रा के नाम छोड़ के। अल्ट्रा दबा के वेल कर रहा भाई आजकल गेंशिन में। लेट्स गो 10। अबे बस कर भाई, ये तो यूज कर लेने दे। 8,000 और कर दिए। 8,000 भाई, पहले ये वाले तो फिनिश करने दे, हो सकता है उसमें मिल जाती। ये बार बार करने का क्या पॉइंट है? बस करो, दर्द हो रहा है यहाँ बाकी लोगों को भी। हद है यार। ओके लिनेट। ओके 20 पुल्स हो गए। पिटी कितनी है? पहले पिटी तो चेक की जाए। अच्छा ये लाना भी मिली थी। उसके बाद 2 और 20 पुल्स हमने कर लिए तो 22 की पिटी पे आ गए हैं। 10 मोर। एक और लिनेट। 32 हो गए। 42। अरे भाई रुक जा, थम जा। अल्ट्रा थोड़ा सा सांस ले गहरी, ये क्या कर रहा है? रुक जा। 10 मोर। 42। लिनेट और बारबरा 2। $52 पिटी पे जाएगा भाई, मुझे लग रहा है पिटी पे जाएगा। बेनेट। ओहो C7 बेनेट। भाई साहब 1 करोड़ का पैकेज है क्या अल्ट्रा का? मुझे भी लग रहा है भाई। 52 हो गया ना? 62। ये तो पूरा पिटी के ऊपर जा रहा है। कम ऑन। अरे यार 62। अब निकल जाना चाहिए, इस 10 पुल के अंदर निकल जाना चाहिए। अब निकलेगा, 100% निकलेगा। 100%। ऑरेंज, गोल्डन। भाई पूरा पिटी पे जा रहा है अल्ट्रा। बेनेट C8 हो गया अल्ट्रा का। C8 बेनेट। विनिंग 50-50 मोर इंपॉर्टेंट देन पिटी। हाँ ये तो है। अब तो आ ही जाएगा, अब तो 100% आ जाएगा। तो 50-50 जीतना है भाई। होयो वालो कुछ तो शर्म करो, बंदा इतना पैसे दे रहा है। भाई 82 पे मिला है ये। C9 बेनेट। भाई बेनेट की 9 कॉन्स्टलेशन निकल चुकी है अल्ट्रा की। बेनेट की 10 कॉन्स्टलेशन निकल चुकी है। C10 बेनेट C10 हो गया। कम ऑन 50-50 विन। इसको इग्नोर करते हुए आगे बढ़ते हैं। अब तुम्हें येलान अर्ली मिलेगी। यू विल गेट येलान अर्ली। अब तो प्रूव हो गया बेनेट अनलकी है। अब अर्ली चाहिए। बेनेट ही बेनेट में ले आ रहा है। वाह। $30। 5 बार 50-50 लूज किया है भाई अल्ट्रा। मुझे लगता है ये होयो वाले ना क्या कहते हैं तेरे साथ नहीं है बिल्कुल भी। 36 हो गई। लिखते रहना 46। अब ये वाली 46 है।
अबे एक तो अर्ली मिल जा भाई। 46 एक अर्ली मिल जा। 56 कम ऑन ब्रो। मतलब भाई मुझे दर्द होने लगा है अब तो। मेरे नहीं जा रहे पर मुझे दर्द हो रहा है अब तो। $66 What the fuck? 76 और बचा ही क्या है? भाई हार्ड पिटी, बार बार हार्ड पिटी पे जा रहा है, बार बार हार्ड पिटी पे जा रहा है। मतलब ये तो कंफर्म ही था। मैं एक्टिवेट नहीं कर रहा कॉन्स्टलेशन। मैं तो वेल्किन लेके भी 5 50 बैक टू बैक जीता। अब भाई ऐसी बातें मत बोलो, अल्ट्रा चढ़ जाएगा। तुम्हारे घर पे हमला कर देगा सीधा वो। अल्ट्रा भाई क्या करना है? क्या करना है? स्टार ग्लिटर मार लूं? हाँ स्टार ग्लिटर मार सकता हूँ। यस स्टार ग्लिटर तो बहुत इकट्ठा हो गया होगा। कहाँ गया? 5 months बार्गेन। स्टार ग्लिटर यहाँ पर हैं, ले लूं? अरे तुम स्प्लैश आर्ट कर रुक जाओ, यहाँ पे बंदे की जान अटकी पड़ी गले में। स्प्लैश आर्ट देख लेंगे। शॉप से पुल, ठीक है। ये यहाँ से मैं यहाँ निकाल रहा हूँ ये, ठीक है। ये सारे हो गए हैं और यहाँ से भी मिलेंगे बहुत सारे, 5 ही मिलेंगे यहाँ से। ओके लेट्स गो। ओके कम ऑन। कम ऑन। अरे यार स्ट्रिंगलेस का क्या करेंगे हम? छी यार होयो वाले ने तो बिल्कुल ही हद ही मचा दी। एक भी अर्ली नहीं दी, एक भी अर्ली। अल्ट्रा कोई भी अर्ली मिली अब तक? और स्टार ग्लिटर है? नहीं है, और नहीं है स्टार ग्लिटर, खत्म। स्टार ग्लिटर खत्म। और अच्छा हाँ 5 है, अभी 3 और मिल सकते हैं। यस यहाँ स्टार डस्ट से नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पे सिर्फ यही रह गया है। नल्ले हुए वाले भाई, सही बात है यार, मुझे और ज्यादा गुस्सा आ रहा है। $36 820 भी है। जेनेसिस नहीं है, खत्म। अच्छा हाँ 820 जेनेसिस हैं भाई, अभी हैं। ओह सॉरी कैंसिल। 38 अल्ट्रा दिस इज योर लेसन। आज के बाद साल होए वालों को 1 रुपया नहीं देना। इससे साबित होता है।
साले एक अर्ली नहीं दे रहे, एक अर्ली नहीं दे रहे। ओके लास्ट पुल। ईरान का 1 रुपया मत देना अल्ट्रा भाई। हाँ मैं सही कह रहा हूँ भाई, एक रुपया देने की जरूरत नहीं होयो वालों को। ये तो बड़ी कमीनी पनी है यार। कुछ तो उनको करना चाहिए था कि बंदा पैसा दे रहा है तो कुछ तो। 43 पुल्स भाई साहब। बस एक 8K वाला टॉप और चाहिए। अरे भाई रहने दो, उकसाओ मत फालतू, बहुत पैसे खर्च कर दिए, लिटरली बहुत पैसे खर्च कर दिए मजाक से हटके। दिस इज बिट टू मच। कॉन्स्टलेशन एक्टिव करना है अल्ट्रा कि नहीं करना बताओ। करना है तो मैं कर देता हूँ, नहीं करना है तो तुम्हारी मर्जी। बताओ बताओ बताओ। डीलर स्लाइट। हाँ मैं तो कहूँगा कि अगली बार येलान का जब आएगा ना, हाँ हाँ 90 भाई लाख रुपए लगा चुका है येलान के बैनर के ऊपर भाई। मेरे को तो सुन के चक्कर आना शुरू हो जाता है। कॉन्स एक्टिव नहीं करना, ठीक है। येलान के बैनर के ऊपर जहाँ 90,000 से ऊपर लग चुके हैं। 1 लाख रुपए के अंदर तो भाई सोचो, यहाँ पे इतने सारे लोग जिनका गेमिंग पीसी बन जाए लाख रुपए के अंदर। ये भाई येलान के ऊपर लगा चुका है और अब तक नहीं मिली। चलो भाई मैं लॉग आउट कर रहा हूँ। अरे स्प्लैश आर्ट देख लूँ आर्काइव के अंदर, बड़ी देर हो गई। किस में है? लिविंग बीइंग्स में है? मॉन्स्टर्स के अंदर है? नहीं, कहाँ है मॉन्स्टर्स? ये मॉन्स्टर्स हैं। कौन नया बॉस है? स्टॉर्म टेरर है, चाइल्ड है, एज द हाला सिन्योरा, शोकी नोकामी। अच्छा ये है, ये हैं सारे के सारे। भाई और नहीं देना भाई। मेरे लैपटॉप में 1.2 लाख का है और सल्यूट टू अल्ट्रा भाई, क्या ही डेडिकेशन है। जी नेक्स्ट, हेलो सर जी, वेलकम वेलकम। तुम स्ट्रीम बंद होने का टाइम पे आए हो दोस्त। क्या स्प्लैश आर्ट है यार। अल्ट्रावेज बहुत बुरा लगा, बट कर लेंगे। 3 दिन ग्राइंड करके 5 स्टार तक पहुंच जाएंगे, बस येलान मिल जाए। प्रीमोस वगैरह ग्राइंड करो। तुम्हारी क्वेस्ट रह गई है कोई? क्वेस्ट तुम्हारी बहुत सारी रह गई हैं, तुम्हें बहुत सारे भी प्रीमोस तो यहाँ से मिलेंगे, ठीक है। इवेंट भी तुम्हारे रह ही गए हैं जहाँ तक मुझे से लगता है। हाँ इवेंट वगैरह भी मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ तो है। हो जाएगा भाई, हो जाएगा, ठीक है। चलो गाइज, व्हाट एन एंड टू टुडे स्ट्रीम ब्रो। अरे ये क्या बात हुई भाई, तुम आते इतनी लेट हो, मैं क्या कर सकता हूँ। मैं तो डिस्कॉर्ड पे डालता हूँ, स्ट्रीम हुए 3 घंटे हो जाते हैं, तुम लास्ट मोमेंट पे आते हो। देख रहे हो, प्रॉपर 3 घंटे हो गए स्ट्रीम स्टार्ट हुए। अब बताओ। हाँ भाई अल्ट्रा, अब अगली बार 1 रुपया नहीं देना ससुरों को, इनकी ऐसी की तैसी। 43 पिटी हो गई, मतलब लगा लो एक भी अर्ली नहीं मिला। सारे 50-50 हारा है और एक भी चीज़ अर्ली नहीं थी। सारे 50-50 लूज और एक भी अर्ली नहीं। इमेजिन, देखा ही नहीं स्प्लैश। अरे मैंने किया तो था, मुझे वहाँ पे नजर ही नहीं आया, तुमने बताया भी नहीं। चलो कल देखेंगे स्प्लैश आर्ट। अब आज भी इस टाइम बहुत डिप्रेसिंग मामला हो गया। जिंतू भाई अब तुम छोड़ो। हिज मनी हिज चॉइस, सीधी सी बात है। गाइज जाते जाते लाइक दबा जाना अगर किसी ने नहीं किया हो इस सारे क्या कहते हैं शो के बीच में। अगर भूल गए लाइक करना तो अब लाइक कर दो, ठीक है। और अब मैं डिस्कॉर्ड पे मिलूंगा। किसी ने डिस्कॉर्ड ज्वाइन नहीं किया, मेरा डिस्कॉर्ड का लिंक पिंड है कमेंट के अंदर, चैट के अंदर पिंड है, ज्वाइन कर लो। क्योंकि इसके बाद मैं अब डिस्कॉर्ड पे मिलूंगा पूरा दिन और स्ट्रीम पे मिलूंगा मैं अब कल शाम को। लगा मौका तो आ जाऊंगा, बाकी हाँ चलो गाइस, एनीवेज ठीक है, मिलते हैं अब डिस्कॉर्ड पे बाकी सबसे। थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू फॉर लाइकिंग, थैंक यू फॉर स्टेइंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मैं मिलता हूँ तुमसे डिस्कॉर्ड पे और कल। चलो टेक केयर, बाय।